surface, on the surface I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I still have hope. So many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. Well, this one is a knocker. Step in on the dance and I just my dance. Everything scattered. Right? Right? Come cross. Right now, man, active. Start with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. Test me now. Without the slackness, active style and pattern, that's a man there. Active. Active. One live life massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When we step out, all face get active. 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 Hey, hit the style now. Clocks on the east side, bad bitch on each side. Big split, chillin' on the beach side. Run things where you feel like. Cake big, have a carve out the peace side. Freestyle now, millions for each line. Too cool, when I need ice in my beverage. Test this bigger, please find the exit. Right now, man, active. Gone with the game like a bandit. We bring the flame like a mattress. Let's me know. Without the slackness, active style and pattern, that's a man there. Active. 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 One live like massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When we step out, all this get active. 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 Active.
Everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish, you critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't want that. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't want ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just karma. Go and play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming, screaming. But I'm the one bleeding. You're the one that's selfish and critical, you could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn you, this might hurt. That's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river stinks too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's really your words. My darling, rose and fire. You're a liar. You say, my darling, rose and fire. In fire. You say, my darling, rose and fire. You're a liar. Shivers my spine so cold, so swimming in the rivers, swimming in the rivers. I'm trying to let go of us, but
long time, can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in, my body bleeding sin, I'm drowning. Heaven, can you save me now from these thoughts inside my head? Yeah, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level, I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and turn ahead. You cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. So hard to save. Hallowed by my love for you, always stop me going under. Follow every step I take, cause our walls are coming down. Yeah, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level, I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and turn ahead. You cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. In the back of my head and I'm dead. I got the devil inside me and everything I see is red. Vision's blurry, I'm in a hurry, my skin is starting to shed quick. Call up the doctor, swallow some pills, maybe I'll wake up in bed. I'm a disaster, can I move faster? Honey, I'm off the edge. No point in stopping me, I'm not your property, gotta take care of that ledge. My friends are dead, I'm losing my head, I gotta get off of these meds. I am unstable, willing and able, give you this body to pledge. Oh my God, you are the devil. Oh my God, you are the devil. Best to give me that loyalty. Best to give me that loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.
They'll be calling me royalty.
I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. I know what you're feeling, I see that look in your eyes. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. 'Cause what I've been dreaming is giving you my paradise. So pick up the pieces. So pick up the pieces. Baby, I'ma be there through the rough parts of it all. Holding your hand, fighting for the things that we want. Be the rock you lean on with you by my side. Baby, when we fall, together we'll rise. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. I know what you're feeling, I see that look in your eyes. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. 'Cause what I've been dreaming is giving you my paradise. So pick up the pieces, so pick up the pieces, so pick up the pieces, so pick up the pieces. Show me you mean it tonight.
rushing through me. Down low, on the street, all you make me feel it. Round the rainbow, burning in the city, rushing through me. Down low, on the street, all you make me feel it. Round the rainbow, burning in the city, rushing through me. Down low. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello everybody and welcome to Arena Esports powered by Etisalat by EN जहाँ पे हमारे AD Gaming strategic partner and Plutonia हमारे पास broadcast partner रहते हैं. I'm going to be your host and caster for the rest of the day. My name is RC और मुझे join किया आज Tultus ने. Tultus, it was a wonderful day yesterday casting with you. मजा enjoy किया and I'm quite sure it's going to be fun today as well. आपके क्या तासुरात हैं आज के बारे में? डेफिनेटली राना आई मीन आई डोंट मुझे नहीं पता अगर आप फॉलो कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे तो आपको फॉलो करना चाहिए बिकॉज ये डोटा इवेंट काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड है एंड इनफैक्ट अगर आपको याद हो जो हमने उरीडू नेशंस का टूर्नामेंट कास्ट किया था तो इसमें भी काफ़ी सारे प्लेयर्स उसी टूर्नामेंट के मौजूद हैं जैसे कि लास्ट मंथली क्वालिफायर्स में शाइनिंग ऑब्वियसली ऑफ कोर्स नाम तो चेंज हुए हैं टीम के एक टीम है जिसका नाम टीम है बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट शाइनिंग क्राउन की तरफ से अगर आपको याद हो कि मेज जो था जो आई थिंक रनर अप या फिर फाइनल्स जीते थे तो वो भी इस टीम में खेल रहे हैं और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो उस टूर्नामेंट के यहाँ पर आए हुए हैं और उस टूर्नामेंट को कास्ट करने में हमें जितना मज़ा आया था उस टूर्नामेंट को देखने में जितना मज़ा आया था और इतनी हाई लेवल डोटा मैं कहूँ कि टियर 2 लेवल डोटा हमें देखने को मिली थी तो हमें इस टूर्नामेंट में भी वही चीज़ रिपीट होते हुए नज़र आ रही है. I mean, all of that you telling me is like great news for me. Tiltus के मुझे तो like I was hoping for obviously a great competition, a great day as well. But Arena Esports जैसे हमने कल CS2 की बात की थी, आज आप Dota का भी मुझे बता रहे हैं कि it's somewhat same level of the tier 2 teams performing. And as for PUBG as well, जब हमने PUBG की teams भी देखी हैं, there are some teams playing from Pakistan qualifying to the monthly finals, and then there is the same case as well कि आपके पास there is best of the best playing. We had Nigma Galaxy playing in PUBG as well. So I think this tournament itself is a great opportunity for us as casters to realize कि ये बेहतरीन टीमें खेल रही हैं इन रीजन्स के अंदर से एंड एज फॉर अदर टीम्स हमने कल भी बात की थी कि उन टीमों के लिए भी अच्छा मौका इफ दे वांट टू लर्न इफ दे वांट टू गेट बेटर एज वेल तो यहाँ तक आएँ इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू be in same platform as these tier 2 teams and obviously I think मुझे थोड़ा सा नाम भूल चुके बिकॉज there's been a while since I casted that tournament but अगर मेरे सामने वो नाम दोबारा आएंगे तो शायद मुझे याद आ जाए but at all I'm very excited कि यार it's going to be the same teams again. डेफिनेटली और आई थिंक राना आपको प्ले स्टाइल से भी उन प्लेयर्स के याद आ जाएंगे पर्टिकुलरली जो मेज का सब पोजीशन 4 रोल होता है वो तो उससे तो आपको याद आ जाएगा. अभी हम देखेंगे कि शायद और भी प्लेयर्स हों जो कि आगे आएँ. शायद आपको याद होगा कि हमने फनिक को भी कास्ट किया था फॉर्मर TI चैम्पियन जो था उसने भी वो टूर्नामेंट किया था शायद वो भी I remember that one. डेफिनेटली अब आपको ऐसा ऐसा याद तो आ ही रहा होगा बिकॉज ऐसे प्लेयर्स को भूलना बहुत मुश्किल है. एंड देन डेफिनेटली फिर DPC के टियर 2 डिवीजन में भी कुछ प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं. Definitely, but let's talk about the prize pool. जिस चीज़ के लिए टीम्स हमें मुकाबला करते हुए नजर आ रही हैं टोटल $1,200 प्राइस पूल रहते हैं क्वालिफायर्स का. नंबर 1 प्लेस वाले को मिलेंगे हमारे पास $650. नंबर 2 वाले को मिलेंगे 300. नंबर 3 पे 150 मिलेंगे. नंबर 4 पे आने वाले को मिलेंगे $100. हमारे पास जो $950 है वो कैश में मिलेंगे और $250 वर्थ ऑफ हमारे पास अरीना ई स्पोर्ट्स पॉइंट रहते हैं दैट यू कैन यूटिलाइज इन द other ways possible. But yes, again, a great prize boost for the qualifiers. हमारे पास जो grand finals होना है, maybe I don't know exactly whether it's going to be LAN or not. वो एक अलग मैं कहता हूँ कि
एक अलग कहानी है. But coming to the tournament roadmap, this is where we are right now, playing the monthly finals number 2, and we got done with the monthly finals number 2 for CS2 yesterday, और आज इसको हम विटनेस करेंगे, and I'm very excited for it. और जो टीम आज खेल के आगे जाएगी वो प्लेयर ऑफ्स में क्वालिफाई करेगी. डेफिनेटली एक टीम हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं प्लेऑफ्स में, वो है टीम शाइनिंग क्राउन, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था. डेफिनेटली मैं अगर अंदाज़ा लगाऊंगा तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर, वन ऑफ ज़्यादा बेहतर टीम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट. बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी टीम्स भी अच्छी नहीं है, बिकॉज एज आई सेड काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड, काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ गेम्स हमें देखने को मिलती हैं. बट 2 और मंथली क्वालिफायर्स बाकी हैं, उनमें से कौन आगे आता है. हो सकता है कि टीम दोबारा कोशिश करे, जैसे कि हमने काउंटर स्ट्राइक जैसे कि मुझे पता चला था काउंटर स्ट्राइक में भी ऐसा हुआ है. तो हो सकता है कि उन टीम्स को एक रिवेंज प्ले खेलने का मौका मिले. बट शाइनिंग क्राउन डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन द प्लेऑफ्स, और बाकी टीम भी जिस तरह खेल रही हैं तो उसमें भी यही लग रहा है कि मतलब कोई, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि कोई टीम लक के ज़रिए पहुंच चुकी है, बिकॉज इन सब की मेहनत, इन प्लेयर्स की मेहनत, इन प्लेयर्स की कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, और जिस तरह ये एक सिस्टमेटिक डोटा खेलते हैं तो वो काफ़ी जाहिर होता है इनके प्ले स्टाइल से. And while you were mentioning out that it is definitely not luck, and I would also suggest that the platform itself, the way the roadmap has been structured, make sure that the best team will go ahead. Why? Because if you are having a bad day, for example, आज की टीमों में से एक दिन का बुरा दिन जाता है, maybe they're not just performing great on their day as well. That doesn't necessarily mean that overall they're a bad team. Again, having multiple qualifiers gives them the chance कि वो आगे बढ़ के दोबारा participate कर सकती हैं. RCW yesterday we were talking about, yes, जैसे आपने mention भी किया था कि they were like, they played again, had the time for revenge. But for me, I look at it a way कि this team evolved, got better. Maybe it was not the monthly finals, but this team deserved to be in the playoffs. And one way or the other, उन्हें ये अरीना स्पोर्ट्स का जो एक स्ट्रक्चर रहता है, इट मेड श्योर कि दिस टीम, इफ दे डिजर्व टू बी देयर, दे गॉट टू दैट पोजीशन एज वेल. तो यही केस डोटा का भी रहने वाला है कि अगर आज कोई टीम नहीं खेल पाती, डोंट लेट इट गेट टू हार्ट. मे बी इट वाज योर बैड डे, मे बी इट वाज समथिंग मिस्टेक्स यू वर मेकिंग, एंड आई होप इफ यू रियलाइज बिफोर द नेक्स्ट क्वालिफायर, you can definitely get your way into the monthly final number 3 or 4 and qualify into the playoffs if अगर उससे बेहतर आप आगे रिजर्व करते होंगे. तो ऑल दिस मीन्स के मोर चांसेस फॉर यू, मोर एवोल्यूशन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर गेम प्ले, एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मच मोर डोटा फॉर अस टू कास्ट. डेफिनेटली. और जहाँ तक बात आर्जी रही है कि कमबैक पोटेंशियल की, तो यू नो डोटा का मेटा भी इसी तरह इवॉल्व हुआ है कि कमबैक मैकेनिज्म पे वैल्व ने काफ़ी ज़्यादा काम लगाया है कि एक टीम बहुत ज़्यादा अहेड भी हो, से 5,000 नेटवर्थ या फिर 10,000 नेटवर्थ, तो कमबैक के लिए ऑल इट रियली टेक्स इज एक टीम फाइट, राइट. एक टीम फाइट के जरिए टीम वापस आ जाती है. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. मैंने और अली ने डिस्कस किया था कि मैप को जो एक्सपैंड किया है, तो उस तरह टीम को डोमिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. वो मिड गेम में ही डोमिनेशन हमें नज़र आती है. बट हम आगे टीम्स की तरफ देखेंगे कि जो खेलेंगे वो अब टीम रैंडम एंड वूफर फैंस. मुझे, मैं बायस नहीं होना चाह रहा, बट इस वूफर फैंस की पिक्चर इतनी अडोरेबल है कि मतलब मैं आई थिंक जो देखने वाले हैं वो भी थोड़ा सा उनका जो सपोर्ट होगा वो उस तरफ जा रहा होगा. If it is yin and yang, I would say Team Random is on the dark side and Team Woofer fans on the bright side as well. और Team Random का जो हमें logo भी नजर आ रहा है, it looks like so very deadly. It's like a Ghost Rider, but with pink flames, something like that. और उस तरह कुछ आ रहा है. And Woofer fans on the other side is all about positivity, is all about get up early in the morning, guys, feel good about yourself, and everything is great. So I feel like it's ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी की थोड़ी फाइट होने वाली है इन दैट केस. और आज हमें पता चलेगा ग्लास like either it is half empty or half full. इस चीज़ का आज हमें आखिर में अंदाजा लगेगा. But obviously it's an adorable picture for them. But excited to see whether they will have great performances. I want to see exactly. And one thing that you were discussing a bit earlier, and I want to come back to that fact, is it's not about the big things that you do on the map. It's about the little things
that going to be counted, कहाँ पे हल्का हल्का प्रेशर क्रिएट किया है, कहाँ 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 अपने से आपने गोल्ड्स उठाने लाइक गोल्ड अपनी टीम के लिए उठाना शुरू किए, कौन कौन से किल उठाइए, एंड स्लोली एंड स्टेडली these things built over time as well, and then you realize कि okay, we have a bit of an advantage that we can capitalize on, and doesn't need to feel very confident. Obviously, as you mentioned, the comeback strategy, the goal on the other side gets like एक team fight होती है. There are portals on the way on the both side that can cause for a surprise attack as well. The Roshan is like 5 minutes down, 5 minutes up as well. So आपका control of the map is also very important. Get part of the day, at the part of the night, where are you exactly playing, and are you positioning yourself at a place where the Roshan is, then that automatically means that you are looking forward to taking Roshan in those minutes. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. मिड लेन की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम मुझे नजर आती है in terms of winning और situating towards your I would say कि आपकी मिड लेन की जो आपकी गेम की आउटकम है उसमें मिड लेन का थोड़ा सा कम आपका फैक्टर होता है. एज फॉर द रेस्ट ऑफ द लेन इम्पैक्ट उनकी तरफ से काफी ज्यादा आगे. मच मोर देन दैट आपकी ऑफ लेन बिकम्स अ वाइटली क्रूशियल थिंग, बिकॉज अब आपकी ऑफ लेन के पास भी जस्ट on the verge of having a bigger map can farm much more, and I have seen that even in the last like the international as well कि आपकी हमेशा ऑफ लेनर से भी काफी अच्छा खासा एक नेटवर्थ जनरेट हो रही थी. डेफिनेटली राना, एज यू पॉइंटेड आउट कि मिड लेन जो पे हम पहले सोचते थे कि मिड लेन सबसे इंपॉर्टेंट लेन है, पर्टिकुलरली मिड लेन का जो टियर 1 टावर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अब वो स्विच हो चुका है. अब ऑफ लेन टावर और सेफ लेन टावर इन पर्टिकुलरली जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी टावर होता है. उससे डिपेंड करता है कि आप कितना मैप कंट्रोल गेन कर पाएंगे. ऑफ लेन हीरो की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है कि वो इनिशिएशन एबिलिटी कितनी जल्दी ऑक्यूपाई, कितनी जल्दी हासिल कर पाएंगे वो. एंड आई थिंक जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं इंटरनेशनल के भी और जितने भी मैचेस खेले गए हैं अभी तक, वो एक या तो स्ट्रॉन्ग इनिशिएटर या फिर एक स्ट्रॉन्ग जिसे कहें कि सस्टेन डैमेज टाइप हीरो लाइक रेथ किंग या हो गया, या फिर बर्स्ट टाइप हीरो या लाइक केओस नाइट हो गया. तो ऑफ लेन हीरो की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी. मैं अगर सोचूंगा ऑब्वियसली जो पोजीशन 1 2 1 2 3 4 5 होते हैं तो वो नेटवर्थ के बेस पर आप पोजीशन डिसाइड होती है, लेकिन मेरे जहन में ऑफ लेन और जो मिड लेन है वो तकरीबन एक इक्वल इम्पोर्टेंस की तरफ आ चुके हैं, और जो कैरी है वो तो ऑब्वियसली कैरी पोजीशन की वैल्यू तो वहीं पर रहती है, और सपोर्ट्स को भी काफ़ी मैसिवली बफ कर दिया है. जैसे कि हम देखें ग्रिम स्ट्रोक, वॉरलॉक, नेचर्स प्रॉफिट, ये सारे सपोर्ट हीरोज़ जो हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल चल रहे हैं, कितनी वो अर्ली गेम में कम्प्लीटली पेस डिसाइड कर सकते हैं. इसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सक्सेसफुल रोटेशंस कर पाएँ और कितना ज़्यादा मैप कंट्रोल हासिल कर पाएँ, बिकॉज मिड लेन पे आते आते यही दो चीज़ें, यही दो फैक्टर डिसाइड करते हैं. कैरी को कितना फार्म मिला वो अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा. मिड लेन में किसने डोमिनेट किया, कौन ज़्यादा आगे है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब मिड लेनर यूजुअली अपनी एबिलिटीज़ का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. पर्टिकुलरली अर्ली गेम और मिड गेम की तरफ लेट गेम पर आते हुए हम यूजुअली देखते हैं कि दोनों टीम को ही फार्म मिला हुआ होता है. इंटरनेशनल में भी यही ट्रेंड देखा है हमने कि चाहे नेटवर्क लीड दूसरी टीम के पास हो या ना हो, फार्म दोनों टीम एक्वायर कर लेती है. जो टीम हारती भी है उनके कैरी भी 6 स्लॉटेड, हमने इतनी दफ़ा देखा है कि 6 स्लॉटेड टेरर ब्लेड जो होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो फाइट में डोमिनेट हो रहा होता है, लेकिन फार्म दोनों टीम को मिल जाता है. मिड लेन कौन जीतता है कौन हारता है इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. ऑफ लेन का आइटम टाइमिंग से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो इनिशिएशन एबिलिटी कब हासिल करेंगे. अगर आप रेथ किंग है तो वो अपने आइटम की टाइमिंग्स काफ़ी डिपेंड करता है, और कैरी भी अपना फार्म निकाल लेता है. तो ऑल इट रियली कम्स डाउन टू इस सपोर्ट कितनी रोटेशन में सक्सेसफुल होंगे और अर्ली गेम में मैप कंट्रोल कितना ज़्यादा हासिल कर पाती है टीम. Exactly. I think that is a lot of the points you pointed out, a lot of the things that you pointed out. Okay, these are the things that we need to look forward to make sure कि ये चीज़ें important रहती हैं. One is your net worth, or generally कि किस चीज़ में divided है. It's not dependent on the carry fact, the mid lane, plus the picks you're going to. And I want to go in depth and for all as soon as we hope for the match to start. But before that, I want to go into the depth of the carry side as well. Okay, you are not really looking forward to those carries. Example, like right now Chaos Knight is
super impactful. उसकी खास वजह रही रहती है कि Chaos Knight is ready to fight, doesn't really depend that much on the farm as well, right? Wraith King का भी काफी हद तक farm में इस टाइम पे नजर आता है. These are the heroes that are like generally being preferred. On the other side, you have Nature Prophet being picked off as a support or maybe as a like a position 4 that has a lot more impact in terms of globally. Dawnbreaker का भी इतना, I would say Dawnbreaker not that much maybe, but generally you have some of those heroes that can sustain themselves in a game by individually, and then when they collaborate together it can obviously form much more impact. So these are the general trend towards the meta, and it has been far developed. We had the international, we have known the top picks and the top bands as well. हमें पता है कौन कैसे खेलता, we know what exactly works and what goes to ban. And I feel like these team, as compared to CS2 where you don't know exactly how it is going on, this Dota should be much more about knowledge and less about, it does involve skills, don't get me wrong, but जितना आप update होंगे about the current meta, जितना वो developed हो चुका है, because there is extensive amount of research available for the like opposite team, and not just that, in general how Dota is played these days. And if you start following that, it will definitely lead you in a better position. So obviously go for the stronger supports, as you mentioned, go for those carries that have been working for teams, the international as well, the tier 1. You can definitely go for that and see the kind of mistakes that you are making. But all in all, I'm very excited to see how it's going to turn out. Maybe we will see something new that we haven't seen in this meta. डेफिनेटली. और कीपिंग इन माइंड के ये जो टूर्नामेंट चल रही है काफ़ी यूनिक टाइमिंग पे, बिकॉज पैच भी अभी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वक्त पे पैच भी आएगा. एंड डेफिनेटली जो सारे हीरोज़ हैं जो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं अभी, तो वो उनको नर्फ तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. आप ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि केओस नाइट को नर्फ मिलेगा, ब्रिसलबैक को नर्फ मिलेगा, नेचर्स प्रॉफिट, वॉरलॉक को हो गया, Grimstroke. प्रॉब्ली एग्जैक्टली ग्रिमस्ट्रोक हो गया. इन हीरोज़ को आई वुड एक्सपेक्ट के सपोर्ट हीरोज़ को थोड़ा सा माइनर नर्फ मिले और कैरी हीरोज़ को थोड़ा ज़्यादा नर्फ मिले, बिकॉज जिस तरह के केओस नाइट, रेथ किंग और ब्रिसलबैक चल रहे हैं, तो उस तरह से लाइक इट्स नॉट इतना आसान नहीं रहता. क्योंकि आप देखोगे कि तकरीबन हर गेम में ये हीरोज़ तो बैन होते ही हैं, और जब बैन नहीं होते तो वो इंस्टेंट पिक टीम ऑप्ट कर लेती है इन हीरोज़ के लिए. तो डेफिनेटली इन हीरोज़ को नर्फ मिलना चाहिए. आई वुड थिंक कि मिड लेन का इम्पैक्ट थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है. बट हम गेम की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि इन टीम्स ने क्या सोचा हुआ है, किस तरह इनको गेम को आगे लेके चलना है. और जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो हीरो हमने एक्चुअली एक दफ़ा मेंशन नहीं किया था, वो डैज़ल भी इंसेनली पावरफुल है, और पर्टिकुलरली कोर डैज़ल, बिकॉज उसको मारना, उसका कूल डाउन ग्रेव का 100% अप टाइम हो जाता है, हील का 100% अप टाइम हो जाता है, और हील इतना ज़्यादा डैमेज करता है विद दैट सेप्टर, तो उसका इंस्टेंट बैन हो गया. ट्री एंड प्रोटेक्टर, स्पिरिट ब्रेकर, ब्रिसलबैकों का, ये सारे हीरोज़ जो मेटा में फेवरेट चल रहे हैं, ये सारे के सारे हीरोज़, यही हीरोज़ आपको मिलेंगे जो तकरीबन हर गेम में बैन होते हुए नजर आएंगे. Perfectly right. Even Speedbreaker as well, we have seen कि ये mid के ऊपर चलता हुआ नजर आया. It can be played as a mid, and this is something happening by the book. आपके पास Chen, Chaos Knight, Grimstroke, ये आपके साथ साथ कुंका, Bloodseeker में भी Nature Prophet, ब्रिसलबैक हो चुका है, मैग्नस होगा, प्राइमल बीस्ट होगा, फिनिक्स, वी हैव सीन द डार्क विलो भी नजर आ सकती है, शैडो डीमन भी. दीज आर द हीरोज दैट वी हैव सीन. आपको पैंगोलियर के भी पिक होते हुए नजर आ सकते हैं. दिस इज व्हाट्स अ ग्रेट पिक फ्रॉम आइदर साइड एज वेल. बोथ आर गुड, देम are going for these heroes that are strong in meta. Grimstroke being picked by random. Woofer fans are going for the Phoenix, and it's probably working out great. हमने Weaver भी देखी थी used as a carry, and it worked out great for team Spirit in the TI. तो I am expecting some of that. तो कुछ वो हिसाब किताब चल रहा है, but there's still Primal Beast in the pool. Maybe we see Primal Beast being picked from either side. डेफिनेटली फिनिक्स भी हमने इस टूर्नामेंट में काफ़ी देखी है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, बट ग्रिमस्ट्रोक डेफिनेटली बहुत एक वाइटल पिक हुआ है. स्पिरिट ब्रेकर का बैन तो आई थिंक लाजमी बनता है. एंड जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे, प्राइमल बीस्ट पूल में रहा था, लेकिन जैसे कि कास्टर कर्स जिसको बोलते हैं आरसी, आई फील लाइक हम उसका शिकार हो गए हैं, या फिर वूफर फैंस उसका शिकार हो गए हैं, क्योंकि प्राइमल बीस्ट इंस्टेंट बैन हो चुका है, लोन रोड भी बैन है, और वूफर फैंस अब एक अर्थ स्पिरिट को पिक करते हैं. ये अर्थ स्पिरिट और फिनिक्स की कॉम्बो के साथ एओई
पोटेंशियल वॉफर फैंस का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ग्रिमस्ट्रोक का साइलेंस ना पड़ जाए। ऑब्वियसली वॉफर फैंस ने एक अच्छे तरीके से इसको काउंटरैक्ट किया है, बिकॉज अर्थ स्पिरिट और फीनिक्स की पोजीशन ऐसी होती है कि वो फाइट से काफ़ी दूर रहते हैं, वो एकदम से इनिशिएट होते हैं, तो साइलेंस उनको करना बहुत ही मुश्किल होगा ग्रिमस्ट्रोक के लिए। And both of them are basically a very annoying supports. Phoenix and Earth Spirit. Even if they are being caught, they both have, as you mentioned, agility and both have movement to get out of the risky situation. Both of them have एक के पास dive है, एक के पास rolling boulder है that can get into position as well. On the other side, Grimstroke needs to be extremely in position where he can pull off these spells. अगर हो जाए silence, so it's a great thing that Phoenix and Earth Spirit की दोनों की attack speed इतनी ज़्यादा है, especially Phoenix की to break off the silence and use their spells. So in that case, I was about to mention Muerta because Muerta has been one of the most picked supports, or maybe अगर उसको carry भी चला सकते हैं, but generally it has been picked a lot by teams, by tier 1, tier 2 teams as well. And I was like, Muerta could have been a great option for team random, as like silence against Earth Spirit and Phoenix works really well, and I understand that it works for them. और थोड़ा सा AoE control भी दे देता है Muerta को, थोड़ी सी एक आपकी वो vulnerability भी, वो invulnerability भी मिल जाती है during her ultimate, so that can work really great against Phoenix and Earth Spirit. So we are done with that, but I think the other thing that I could be looking forward to that might get picked was कि चलो ठीक है, we could have seen a Bristleback or maybe a Primal Beast or Spirit Breaker, either of these coming in. मैंने कहा शायद आपके पास वो बीच में कोई और वो रहता हो offlane, but Lone Druid might be, I'm sorry, I just saw that Lone Druid भी ban हो चुका है. Like almost everything is getting banned. What generally is being banned or generally is being picked is just being banned from either side. पैंगोलियर काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्स है, और जैसे आपने कि मेंशन किया मोर्टा बहुत ही ज़्यादा पिक हो रही है, पर्टिकुलरली ऑन द सपोर्ट रोल। कोर मोर्टा भी खेली जाती है और उसका डैमेज पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मोर्टा की एज अ सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बिकॉज उसका AoE साइलेंस जो होता है, बहुत कम एबिलिटीज़ डोटा के अंदर इंस्टेंट साइलेंस वाली एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन मोर्टा हैज़ वो इंस्टेंट साइलेंस। तो इन पर्टिकुलर एक काफ़ी अच्छा काउंटर होता है एक फीनिक्स और अर्थ स्पिरिट से, बिकॉज फीनिक्स एक तरह से फोर्स हो जाता है कि वो अपना एग जो है इंस्टेंटली खोले, बिकॉज एज सून एज फीनिक्स डाइव अंदर करेगी तो मोर्टा का साइलेंस आएगा और फिर फीनिक्स से का अपनी अल्टीमेट खोलना नामुमकिन हो जाता है। तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा काउंटर पिक मोर्टा आया है। पैंगोलियर भी उनको नज़र आ रहे हैं इनके पास, लेकिन एक कोई सिंगल टारगेट एबिलिटी नहीं है जो ग्रिमस्ट्रोक की अल्टीमेट को इस्तेमाल का फ़ायदा उठा पाएँ। वो प्रॉब्ली उनके ऑफ लेन या कैरी हीरो में से कोई आएगा, और वूफर फैंस को हम देख रहे हैं वो अपने AoE एबिलिटी पे मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, और इनफैक्ट स्काईराथ मेज आया है, तो इनका जो मिड लेन है वो काफ़ी ओपन है कि उस पर शायद अर्थ स्पिरिट जाए पैंगोलियर के अगेंस्ट। And plus, Skyrath Mage is generally, I would consider a great pick here as well. Majorly because the reason Centaur, Warrunner, Earth Spirit, Phoenix are both on the, all three of them are on the strength side, giving enough room to Skyrath Mage के वो थोड़ा सा cover के अंदर खेल सकते, can play from the behind as well. On the other side, we have a bit of not exactly tanky support. They're annoying. Don't get me wrong. Grimstroke and Muerta, both of them are really great, but that when you have that strength running towards you in terms of Earth Spirit, Centaur, Warrunner, Phoenix, तो उस केस में Skyrath Mage के ऊपर से attention कम हो जाती है, giving Skyrath Mage enough time to deal a lot of damage. Troll Warlord being picked, I think it's generally great, works super great against the Phoenix, Earth Spirit वगैरह, and especially the way इसका scepter भी काम करता है कि उसके ऊपर से dispel कर जाता है, तो obviously a good pick coming in from either side. We have a Gyrocopter as well that can be picked from, अभी Gyrocopter भी रहता है that has generally been picked as well. Faceless Void has also been picked, could be a good pick for team Woofer fans. And then we have I think Baki, I was thinking of Chaos Knight also banned, and then we were thinking, oh no, I was mentioning Faceless Void, and there we go. Faceless Void भी अब बैन हो चुका है। What Tala, what is happening? Should I stop speaking for the better of team Woofer fans? No, definitely not RZ, because Woofer fans I think Phantom Assassin की तरफ जा सकते हैं। फैंटम असैसिन पूल में अभी भी मौजूद है, बिकॉज उनको एक BKB बिल्डर तो चाहिए होगा, लेकिन वो एक लाइफ स्टीलर की तरफ भी
जा सकते हैं। लाइफ स्टीलर भी काफ़ी ज़्यादा मेटा के अंदर और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हुआ है अभी, लेकिन अब टीम रैंडम उनकी कॉम्पोजिशन तो बहुत ही वेल डिफाइंड है, राइट? मैग्नस ऑफलाइन जाएगा, पैंगोलियर मिड जाएगा, ट्रोल वॉर्ड कैरी मोटा ग्रिमस्ट्रोक सपोर्ट्स होंगे, और वुफर फैंस का भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ चुका है। बस उनको कैरी उनका एक रहता है, वो किस कैरी की तरफ जाएंगे तो वो देखना पड़ेगा। मिली कैरी भी पिक करना, जैसे लाइफ स्टीलर आप पिक करते भी हो तो रैंडम के पास एक रिवर्स पोलैरिटी की एबिलिटी है जो कि स्पेल इम्यूनिटी के थ्रू जाएगी और वो फिर भी आपको स्टन पड़ जाएगा, बट इनफैक्ट वो एक टेरर ब्लेड के लिए जाते हैं। क्या ये टेरर ब्लेड इनफैक्ट सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा गेम जितवाने में, ये देखा जाएगा, बिकॉज मैंने इस पैच में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल टेरर ब्लेड नहीं देखे हैं। Exactly, and Terrorblade generally strongest carry considered in the meta is not that much strong in this. We've seen Chaos Knight dominate it. So somewhat Terrorblade की एक और issue होगा. So great concerns for that. Terrorblade just need to survive in order to make sure Skyrath, Phoenix and Unspeed deal the damage they want to deal. So एक फायदा ये होता है कि BKB Sunder will give him enough time to survive against Tall Warlord, Magnus की RP वगैरह, and suddenly goes towards a better strength carry, like tanky carry as compared to PA as well. PA if it gets locked down by RP or something else will probably go down really quickly. Faceless Void का तो ये था ना कि it can wait for the time walk, get themselves in a better situation and pull off maybe Pango, Troll Warlord or some other supports Muerta Grimstoko without getting some in trouble. But we know for a fact that team Woofer fans, team Terrorblade, they will be targeting the carry as well. Pangolier ka role, Magnus ki RP, Troll Warlord ki ultimate and coming just writing in. The carry needs to survive all of that. So I think the best thing could have been this or some other strength carry. Raytheon could have been a good option as well, generally, but it doesn't work really that great against maybe Troll Warlord. So वो एक हिसाब किताब रहता है. But if Terrorblade survives enough for team Woofer fans to land their spells in terms of Egg, in terms of Skyrath Ultimate, Earthspit Ultimate, I think they might just win the duel. But if he goes down to the fact that chalo sahi hai, Pango ki Ultimate, Magnus ki RP, and Grimstroke ka Silence, Muerta ka spells as well. If he goes down in all of that, I feel like that will be the major issue. And plus one more thing, Terrorblade isn't that agile. So pulling it off on him is not that much difficult. डेफिनेटली आरजी, मैं आपकी सारी बातों से तकरीबन इत्तेफाक करता हूँ। इन दी एंड वुफर फैंस को मेक श्योर करना है कि वो अपनी इनिशिएशन में कामयाब हों एंड एटलीस्ट टीम रैंडम के कुछ प्लेयर्स को एटलीस्ट 1 और 2 हीरोज़ को निकाल पाएँ। मीनवाइल टीम रैंडम का जो इनिशिएशन पोटेंशियल है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बोला कि इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं कि वो टेरर ब्लेड को अगर नज़र आ गए, टेरर ब्लेड की पोजीशन अच्छी नहीं हुई तो टेरर ब्लेड को फाइट से निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। आरपी है आपके पास, पैंगोलियर की एबिलिटी है, पैंगोलियर की अल्टीमेट है, तो अगर टेरर ब्लेड को आरपी पड़ जाए तो टेरर ब्लेड का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर्टिकुलरली बिकॉज ट्रोल वॉर्लॉर्ड के पास एम्पावर होगा तो इल्यूजन से भी डील करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है उस सूरत हाल में। बट सो टीम वुफर जो हैं उनको मेक श्योर करना है कि सेंटोर वॉर रनर और स्काईराथ मेज और ये जो इनकी सारी हीरो कॉम्पोजिशन है वो फाइट को स्टार्ट करें, वो फाइट को लीड करें और फिर टेरर ब्लेड बाद में आके फाइट को ज्वाइन करे, अपने आप को रिवील ना करे। और टीम रैंडम का जो गेम फाइट विनिंग सिनेरियो यही है कि वो अपोनेंट के टेरर ब्लेड को स्पॉट आउट करके उसको एटलीस्ट आरपी करने की कोशिश कर दें, बिकॉज उनके पास अगर देखा जाए तो किलिंग पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो उनके साथ तमाम हीरोज़ इस तरह पिक्ड हैं कि वो दूसरी टीम की कोर जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीरो को ही टारगेट कर सकते हैं। बिकॉज मैग्नस जो है या पैंगोलियर जो है उसका फीनिक्स पे जाना या अर्थ स्पिरिट पे जाना या स्काईराथ मेज पे जाना, इन हीरोज़ पे जाना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, बिकॉज अगर आप टेरर ब्लेड को नहीं निकालोगे तो फाइट आपके लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल होती जाती है। Exactly. I think, and plus, Terrorblade is going to be the key factor here. In multiple cases, you don't have somebody to stand
for good amount of time against him. He deals a lot of damage. Plus, you don't have a lot of tankiness in terms of कि आपका offlaner में कहूँ is crazy tanky. And plus, your supports are not exactly like कि चलो ठीक है, they are getting out as well. So once they're in a sticky situation, there's a lot of magical damage coming from the side of team Woofers. वो magical damage भी बड़ा insane रहता है. तो वो बात रहेगी कि चलो सही है, team Woofers के लिए it's more or like protect Terrorblade, play around him. We have Centaur की ultimate as well. Maybe Centaur goes for the scepter in this game. वो भी देखना पड़ेगा. Then we have silencers coming on the other side. But in terms of execution, in terms of the playing of Muerta and Grimstroke, they are really annoying with the silences, as जैसे हमने बात की थी, coming of Pangolier with the stuns as well. So Phoenix and Earthspit also needs to be very careful कि in terms of protecting your teammate terribly, you get yourself out, and if that, in case that happens as well, Terrorblade alone cannot do anything that much. He can survive for a long time, he can survive while dealing damage. So generally it's like you need to be careful about your position, you need to be careful about Terrorblade as well. He needs protection, he needs to make sure कि वो RP से बच के, RP से बचा भी ना हो तो he's like surviving in all of that. But on the other side, Magnus generally is a good option in terms of कि if you're playing obviously the agile one, you're picking somebody up, taking him coming inside, क्या वो आपको ले उठा के ले, any hero being picked like that, either Skyrath Mage or Phoenix, will be a great way to win a team fight. So Magnus, I will be looking forward to Magnus के यार वो किसको secure करके लाता है, because any single teammate inside of Team Woofers, if he dies, that's a huge loss for the team fight. डेफिनेटली. तो तकरीबन सारी की सारी बात इस आई थिंक मैग्नस ही वही हीरो है जिसको हमें देखना पड़ेगा गौर से कि वो किस तरह अपनी टीम के लिए फाइट बनाते हैं मिड लेन की तरफ, जैसे कि हमने पिक किया था अर्थ स्पिरिट और पैंगोलियर का सामना होगा. और तकरीबन मेरे ख्याल से इवन लेन ही है ये. दोनों हीरोज़ के पास इतना ज़्यादा किल पोटेंशियल नहीं है. पैंगोलियर का डेफिनेटली अर्ली लेवल्स पे उसको थोड़ा सा मसला होगा, बट वो स्वॉशबकल और ये एबिलिटीज़ आएंगी तो फिर मरने का तो चांस नहीं है. मीनवाइल लेकिन टॉप लेन पे ये जो लेन है ये टीम वोफर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज ग्रिमस्ट्रोक का इंक्सवेल भी है, साइलेंस भी है, काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं जो ट्रोल वॉरलॉर्ड के साथ मिलकर टीम वोफर की है ऑफ लेन को. इवन सेंटोर वॉर रनर मेरे ख्याल से उस डैमेज को सस्टेन नहीं कर पाएगा. And exactly, and the bottom lane as well for the team Woofer is not that easy. उसकी वजह ये रहती है Magnus is going for the magical, does a lot of damage to Phoenix, and Muerta also deal a good amount. And exactly, look at that, we might have seen a first blood coming in, लेकिन Magnus and Muerta, they deal a lot of magical damage. All the issue is the mana right now, and if we see a lot of mana coming in, Terrorblade is not great against magical as well. So bottom lane is much more concerning for me for Team Woofer as compared to top. Centaur can tank, maybe Silence come in, do some magical damage on either side, but I think we need to be looking at the bottom side very carefully. How does top lane though, Centaur War Runner almost going to die, and will that be first blood? हाँ, definitely sensitive, going to get the first blood. लेकिन इनफैक्ट डबल दोनों किल्स उठा लेते हैं टॉप लेन की तरफ, और उनकी लेकिन ऑफ लेन पे भी मोर्टा के ऊपर सिक्योर हो जाती है. तो ये टॉप लेन डेफिनेटली इनको सेंटोर वॉररनर को केयरफुल खेलना पड़ेगा. वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे इस लेन में इतना ज़्यादा अकॉम्प्लिश करने के लिए. और बॉटम लेन पे जो हमारा किल पोटेंशियल है डेफिनेटली, और टीम टेररब्लेड को सेव करने के लिए जो पोटेंशियल फिनिक्स रखता है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है. तो डेफिनेटली मैजिक डैमेज की जो आप बात कर रहे थे वो बात तो अप्लाई होती है, लेकिन आई थिंक वो फिनिक्स के लिए ज़्यादा डेंजरस चीज़ है एज़ कम्पेयर टू द टेररब्लेड. वॉन चार्जेस भी उसके काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं, 6 वॉन चार्जेस, तो थोड़ा सा मुश्किल है टीम रैंडम के लिए. दोनों साइड की ऑफ लेन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही हैं. टॉप लेन पे इनिशिएशन हुआ है ट्रोल वॉरलॉर्ड पे, क्या वो सक्सेसफुल होगा? बट कैमरा थोड़ा सा मूव हो गया है वहाँ से, बट आई थिंक ट्रोल वॉरलॉर्ड विल बी फाइन.
I think exactly है. So यहाँ पे मेटा का भी इस्तेमाल हो चुका है. Both of the players that have been able to get out as well. साथ साथ मैजिकल डैमेज इस्तेमाल किया. फिनिक्स के ऊपर यहाँ पे स्पेल इस्तेमाल किया था साइलेंस का. And Magnus just going ahead, try to take him, make sure कि वो निकल जाए. एक हिट के ऊपर रह जाता है. He is able to get, Void is able to get the kill off, but at the same time Crepa यहाँ पे उसको trade out कर लेते हैं with taking Magnus out. Magnus obviously इस मेटा के जाने के बाद it could have been much like अब इंतजार कर सकते हैं, but they saw an opportunity. They tried to capitalize on the fact. Unfortunately, it didn't exactly yield a lot of benefits. Maybe it was on the opposite side as well. But look at that. Oh, now. Troll Warlord gone. That was obviously with a lot of magical damage. Not just that, Mag ये charge उसके ऊपर कहते हुए नज़ारे magic stick का इस्तेमाल किया जाता है. And now Centaur is just waiting for his double-edged sword to come back to take off the second pick as well. डेफिनेटली ये ऑफलाइन टीम वूफर टर्न अराउंड कर रहे हैं. ट्रोल वॉल और ग्रिमस्ट्रोक के ऊपर किल उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन टीम रैंडम को वो लेन इस तरह नहीं हारनी चाहिए. मिड लेन जैसे कि हमने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ, काफ़ी ज़्यादा इवन मिड लेन है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा किल पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा. बट टीम वूफर अभी तक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं लेन को डोमिनेट करने में. जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट हिट्स की तरफ तो ट्रोल वॉलआउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. टेररब्लेड के पास ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ लास्ट हिट्स हैं, 23 और लास्ट हिट्स और 5 डिनाइज कंपेयर टू ट्रोल वॉलआउट के 14 और 7 डिनाई. Exactly. We have seen like him getting up a huge advantage. इनको kill भी मिल चुकी थी on the offlaner, so that's one good thing. But look at the mid laner, both of them are trying to contest left and right. Earthspirit had a better start, but in terms of getting an level on the advantage, but kahin na kahin Pangolier seem to be catching up on that fact. Kill potential itna zyada nahi rehta. Something greater needs to be pulled off in terms of gameplay just to make the kill potential. It's not that easy from either side, I think. So वो एक हिसाब किताब रहता है. Bounty no लेके आते हैं so that he can charges upon his bottle. But look at that, they're going on the Skywrath mage. There's nothing they can do, and this is what the major concern is. अब they can stand against this Centaur Warrunner can stand against Troll Warlord and Grimstroke maybe next time as well. लेकिन the major concern is कि they Skyrath's mage cannot at all. उसको ध्यान से खेलना पड़ेगा. The moment he's caught, he's down. There's nothing that can save him, even if a Vanguard वाला Centaur आपके साथ मौजूद हो. डेफिनेटली. एंड ये टॉप लेन की तरफ काफ़ी अच्छा टेलीपोर्ट बेट आउट किया है. बट मीन वाइल मिड लेन की तरफ इनिशिएशन होती है पैंगोलियर पे. अल्टीमेट अर्थ अपना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैंगो का काफ़ी इज सिक्योर टीपी आउट हो जाएगा और स्काईराथ मिड टीपी भी कर लेते हैं. तो डेफिनेटली ट्रोल वॉर्डर को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गई है फार्म करने के लिए. किल्स भी उनकी तरफ आ रही हैं स्काईराथ मेज की तरफ, और रोटेशंस भी अब नज़र आ रही हैं हमें आते हुए. लेकिन इन रोटेशंस का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. रून वाटर सिक्योर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए टॉप लेन की तरफ स्पॉन होता है. एंड अगेन ये लोग टॉप लेन की तरफ इनिशिएशन की तरफ कोशिश कर रहे हैं. सेंटोर वॉर रनर काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पर उनको फॉल कर जाना चाहिए. स्काईराथ में इसका मिस्टिक फेयर आता है. अर्थ स्पिरिट भी टीपीएन कर लेते हैं और ट्रोल वॉलर टीपी आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कामयाब हो जाएंगे. और ग्रिमस्ट्रोक भी इनफैक्ट निकल जाना चाहिए, और बोल्डर कनेक्ट नहीं होता तो उससे वो सेफली निकल जाएंगे. तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रोटेशन भी उन्होंने फोर्स कर ली टीम रैंडम ने. अर्थ स्पिरिट की टॉप लेन की तरफ टीपी आउट भी हो गया और किल भी हासिल हो गई ट्रोल वॉलॉर्ड को. That's definitely great things in terms of आपके for the your troll warlord as the on this other side of the world. Terrorblade को ज़्यादा बेहतर फॉर्म भी मिल रहा था. Terrorblade को ज़्यादा kills भी मिल रही थी, and he was surviving in much better way. Obviously farm भी ज़्यादा कर रहा है. He's just going on the bottom side taking creeps as well. In terms of last hits, he's just getting वो भी तो ये कुछ इसका सारा का सारा एक बेहतर सीन है कि now troll warlord is getting kills and is able to get out as well. और अब वही बात है कि he has gained advantage and probably is going to hit level 6 very soon that can stand against वो Centaur Warrunner. अब थोड़ा सा जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि कैन दिस डील सम काइंड ऑफ डैमेज, जहाँ पे पुश करके पैंगो को टावर में पुश कर दिया जाता है, बट ऑब्वियसली इज एबल टू गेट आउट यूजिंग हिज सेकंड स्पेल, गेट्स द क्रीप्स एंड नाउ ही इज जस्ट एबल टू पुश द लेन इनटू द एनिमी टावर. प्रॉब्ली अब साथ मे बी इज लुकिंग टू रोटेट ऑन टू द बॉटम साइड. डेफिनेटली मिड लेन लो एलिमिनेट करना चाहेगा की तरफ तो अर्थ को किल निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. मीनवाइल फिनेक्स को वो मारने की कोशिश कर रहे हैं. डाइव मौजूद है फिनेक्स के पास, लेकिन साइलेंस आ जाता है ग्रिम स्ट्रोक का. टीपीएन वो करते हैं एंड देन फिनेक्स विल फॉल. मैग्नस बहुत ही ज़्यादा लो हुए हैं. टेररब्लेड ने अपना मेटामॉर्फोसिस खोल दिया है, लेकिन
किसी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब रेडिएंट की टीम वुफर की भी रोटेशन आती है और मीनवाइल पैंगोलियर भी वापस आ जाते हैं, टेरर ब्लेड को मारने की कोशिश करते हैं आरपी, लेकिन सैंडर वो निकाल लेते हैं फुल एचपी का टेरर ब्लेड और उसको मारने के लिए कोई डैमेज मौजूद नहीं है। मीनवाइल टेरर ब्लेड मोटा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट स्पीड भी है, लेकिन अर्थ स्पीड भी अब रोटेट कर चुके हैं और टेरर ब्लेड के लिए एक किल हो जाएगी। ग्रिमस्ट्रोक भी फॉल कर लेते हैं। दोनों टीम्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा रोटेशंस तो नज़र आई थी, लेकिन इन दी एंड आई थिंक टीम वुफर थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। और मीनवाइल एक्चुअली टॉप लेन की तरफ ट्रोल वॉरलॉर्ड ने एक सोलो किल निकाली है सेंटर वॉर रनर पे। तो ओवरऑल आई थिंक उस किल के बाद दोनों टीम्स के लिए काफ़ी इवन फाइट मिली है और पहली दफ़ा अब नेटवर्थ जो है वो टीम रैंडम की तरफ जाते हुए हमने देख रहे हैं। और ट्रोल वॉरलॉर्ड की जो लास्ट हिट जो हम देख रहे थे कि टेरर ब्लेड के डबल थे, वो अब ट्रोल वॉरलॉर्ड उससे भी कम बैक कर चुके हैं। 47 लास्ट हिट्स कंपेयर टू द 54 ऑफ टेरर ब्लेड के। तो काफ़ी एक्शन पैक गेम देखने को मिल रही है हमें। 6 किल्स 13 किल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं 9 मिनट के अंदर। और इसी तरह जिस तरह इन टीम की कॉम्पोजिशन है, रोटेशन तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। अब ट्रोल वॉरलॉर्ड के ऊपर जाया जा रहा है, साइलेंस भी हो चुके हैं। ट्रोल वॉरलॉर्ड अपनी अल्टीमेट एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे वो, एंड आई थिंक वो यहाँ पर फॉल कर लेंगे। Exactly, and with the way that charged up as well, that silence, great ultimate coming in from Earth Spirit, that's a good advantage जो कि छीन के वापस लिया गया। And one thing that you were right about was कि इसके लिए आपके पास टीम्स दोनों की तरफ जाए, but look at the charge coming in, यहाँ पे बिल्कुल Grimstone को catch out कर लिया गया with the help of Centaur War and Earth Spirit, and now they're just charging up towards Pango, but it's not going to be that easy. He has his ultimate, he has the mana to pull off the second one as well. Oh, that's just a bit sad. He was got pushed to the bottom, लेकिन that's just not going to stop Pangolier. वो jump करके उस cliff पे now trying to go towards the Centaur Warren. That's going to be a bit difficult. तो tall Warlord डैमेज डील कर सकते हैं, वरना उनके लिए काफी मुश्किल है। As for tall Warlord, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। He's going to just capture Centaur, को भी eliminate करना है and going to charge up for Phoenix. Phoenix has his ultimate. Garrett gonna use his ultimate और let's see कि यहाँ पे ultimate लगा के उसको eliminate करे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी with the help of Grimstock, Pango and Tall Warlord will waste the act और साथ साथ finish कर दिया जाएगा। Great for team यहाँ पे हमारे पास टीम के पास रहती है, नॉट द टीम बट इट वाज अ फाइट डेफिनेटली। एंड आई थिंक इस तरह हमें नज़र आ रहा था कि टीम वुफर की जो रोटेशन थी तो वो टीम रैंडम को ओवर पावर कर लेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड आया था। और मीनवाइल बॉटम लेन पे भी मैग्नस विल फॉल अर्थ स्पीड की बेहतरीन रोटेशन की वजह से और एक किलिंग स्प्री टेरर ब्लेड को हम देखते हुए नज़र आ रही है। मांटा स्टाइल की तरफ वो जा रहे हैं। बट मीनवाइल टीम रैंडम की जो टीम फाइट पोटेंशियल हम देख रहे हैं, जो वो उनकी सिनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आई वुड से, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करने में काफ़ी अच्छे हैं। रोटेशंस टाइमली आ जाती हैं एंड अगेन सेंटोर वॉर रनर पे इनिशिएशन होती है, इंक्स पर भी कनेक्ट कर लेता है ट्रोल वॉर रनर, लेकिन नेट नहीं एक्टिवेट होता। तो मीनवाइल वो आगे भी जा रहे हैं, लेकिन उस टेलीपोर्ट की वजह से वो पीछे चले जाएंगे। ट्रोल वॉर का स्टन भी आता है, पैंगोलियर भी मौजूद है, तो वो ग्रिमस्ट्रोक के ऊपर नहीं जाएंगे। 10-10 नाउ, काफ़ी ज़्यादा इवन दोनों साइड की तरफ से। दोनों साइड के सेफ लेनर्स को अपना अपना फार्म मिल रहा है और दोनों साइड के ऑफ लेनर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेटवर्थ की तरफ अगर हम देखें तो टेरर ब्लेड काफ़ी ज़्यादा आगे हैं ट्रोल वॉरलॉर्ड के, पर्टिकुलरली बिकॉज उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है टीम रैंडम का। टीम रैंडम को फोकस टीम फाइट्स देने में है और टीम वुफर्स काफ़ी अच्छे काफ़ी कामयाबी की शो कर रहे हैं, काफ़ी कामयाबी शो कर रहे हैं इस चीज़ में। 4 Protect 1 स्ट्रेटजी जो होती है, बट अगेन आरजी कास्टर कर जो मैंने जिक्र किया था, तो टेरर ब्लेड फंस गए हैं अब 4 लोगों के बीच में। सेंटोर वॉरन ने अपने अल्टीमेट एक्टिवेट भी की थी, संडर भी टेक ऑफ कर लिया था, लेकिन इतना ज़्यादा सपोर्ट मौजूद नहीं था। तो टीम रैंडम ने अच्छा हुआ ये रियलाइज़ किया कि टेरर ब्लेड को फ्री फार्म मिल रहा है और वो इंस्टेंटली उसको शट डाउन करने के लिए रोटेशन उन्होंने की। यहाँ पे अगर वो स्टार प्लेस बॉटम की तरफ रोटेट करें, the ultimate key है taking the tablet out using the RP, that clearly means that we have enough time for team first to put pressure on the map। आपके मिड लेन के ऊपर यहाँ पे प्रेशर किया, टॉप के सेंटर ने यहाँ पे टावर ले लिया and now they're going for the mid tower as well more तक, so they are equally creating pressure। In the case of Terrorblade, that is what you have to do, you need 4 players to take him out, that was the same। और उसके ऊपर in the other case your team in the control of the most in mid and top, लेकिन this is a great call। Waller will definitely put him over Terrorblade in terms of net worth advantage, and now
वो भी आ चुके हैं 13 minutes battle fury obviously that's a time with threads and magic stick डेफिनेटली एंड बैटल फ्यूरी प्लस एम्पावर टेररब्लेड की इल्यूजन्स को आगे जाके मारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा बिकॉज वो डैमेज आप इग्नोर नहीं कर सकते ट्रोल वॉरलॉर्ड का। ट्रोल वॉरलॉर्ड के सामना करने का एक ही तरीका है, पर मैं बोलूँगा दो हीरो का एक ही तरीके से आप फेस कर सकते हो, एक उर्सा और एक ट्रोल वॉरलॉर्ड है कि आप उनको फाइट के अंदर गाइड करो। लेकिन जैसे कि आपने मेंशन किया था पहले आरजी के टेररब्लेड इतना ज़्यादा मोबाइल हीरो नहीं है, तो इन दी एंड इन लोग को यही देखना पड़ेगा। इन दी एंड आई थिंक इन बात इन कैरीज पे ही आएगी और इन ऑफ लेनर्स पे आएगी कि कौन सी टीम बेहतर इनिशिएट करती है, कौन सी टीम अपने कैरी को डैमेज डिश आउट करने में हेल्प कर सकती है। Terrorblade could go towards kind of dispels and like Manta could have been great. साथ साथ उसका भी काफी अच्छा रहेगा अगेंस्ट एंड ट्रोल वॉरलॉर्ड के साथ साथ for some time because you don't have a lot of damage to kill the other team. You have that. Look at that. They have been smoked up. यहाँ पे charge करते हुए जाते हैं. Trying to spot the kid. They have been able to dodge it. शुरू होते साथ ही खत्म हो चुकी थी and they were able to spread भी वहाँ से रोलिंग करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं and तो दूसरी साइड के ऊपर the team had that put off really well. Pango is standing on the mid and that's great laners. यहाँ पे smoke coming off. यहाँ पे the Phoenix as well can take him out before he gets off that can definitely yes and at the same time वहाँ पे ultimate के साथ with the Pangos and यहाँ पे साथ साथ जो बाकी spells आ रहे हैं वो is ultimate and they are able to take out Gares may survive but unfortunately उनका भी बचना बहुत मुश्किल होगा. Just gonna be chasing and sooner or later डेफिनेटली तो एक 4 हीरोज़ को वो मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. टेररब्लेड फार्म तो कर रहे हैं लेकिन बाय नो मींस ये एक अच्छी चीज़ टर्न आउट के अच्छी चीज़ है क्योंकि टीम रैंडम ने एक बेहतरीन टीम फाइट दी है. ट्रोल वॉरलॉर्ड और पैंगोलियर को इतना ज़्यादा फार्म मिला है उस फाइट की वजह से. टावर भी उन्होंने मिड लेन का निकाल दिया है और ट्रोल वॉरलॉर्ड सिर्फ एक एम्पावर और बैटल फ्यूरी के ज़रिए फाइट्स में एंटर हो रहे हैं. तो ये चीज़ थोड़ी सी ख़तरनाक साबित हो सकती है बिकॉज टेररब्लेड को एक्टिव होने में आरजी काफ़ी ज़्यादा टाइम है. मीनवाइल ट्रोल वॉरलॉर्ड जो हैं वो अभी से एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं. and Troll Warlord is just gonna get out और यहाँ से अब सारे थोड़ा सा but look at that they have smoked up and now just charging to take the fact मोर्ता भी यहाँ पे smoked up होके खड़े हुए हैं साथ खास spot यहाँ पे players रहने वाले हैं. यहाँ पे ward भी लगाया जाता है. team is trying to get up. They have seen the fact कि अगर यहाँ पे push करते हुए नजर आ रही हैं उनको catch out कर रही है but good for Pangolier कि उनके पास अगर catch out भी हो जाए he has ultimate so needs to be silenced for they can pull this smoke it work out very well और काफी हद तक team random क्या पूरे हद तक team random was able to back out situation because काफी Magnus के RP नहीं रहती. They didn't want to take this fight and they didn't know exact situation भी रहती है. Centaur wall runner तो ऊपर की तरफ आ चुके हैं. Magnus भी वहीं पर both offliners in front of each other but Centaur starts very fact कि he can farm much better way और he can farm as quickly. उनके पास यहाँ पे lane भी रहती है, उनके पास आपका jungle भी रहता है. He's just trying to create more pressure towards the top side while your carry has a lot of space towards the game. यहाँ पे साथ साथ उन्होंने देख भी लिया कि players रहते हैं वही गेम स्ट्रोक के ऊपर भी चार्ज अप किया जा रहा है. वो ट्रोल वॉरलॉर्ड के ऊपर इनिशिएशन ट्रोल वॉरलॉर्ड साइलेंस होके वो मर जाते हैं स्काइलैथ मेट की अल्टीमेट की वजह से. बहुत ही इंपॉर्टेंट किल टीम वूफर्स को मिल चुकी है और ग्रिमस्ट्रोक भी अब यहाँ पर फॉल कर जाएंगे. स्पिरिट ने अपना रोलिंग बोल्डर तो एक्चुअली मिस कर दिया जिसकी वजह से ग्रिमस्ट्रोक शायद बच जाए लेकिन नहीं. सेंटर और वॉरलॉर्ड अंदर जाते हैं और स्पिरिट ट्रेल को क्लीन अप कर लेते हैं. मॉर्टन ने अपनी अल्टीमेट एक्टिवेट कर ली है लेकिन वो क्या किसी चीज़ में सक्सेसफुल होंगे. पैंगोलियर भी अब आ गया है और उसकी वजह से स्काइलैथ मेट फॉल कर जाएंगे एंड barely Centaur War Runner manages to TP out. काफी ज़्यादा worth it fight. बिल्कुल ट्रोल वॉरलॉर्ड को मार दिया जाता है तो इसमें एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा टीम वूफर्स रीगेन कर लेते हैं. काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ गेम
दोनों टीम्स इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि दोनों के कैरीज़ को शट डाउन करना लाज़मी है, दोनों के कैरीज़ पे ही ये गेम डिपेंड कर रही है। I mean, काफी a lot of things that were made for both teams take out the car. There's a limited amount of damage from team random in Pangolier, Magnus RP. There's not a lot of magical damage. कहीं ना कहीं मोर्ता का रहता है. But on the side of team Woofer, not just carry. You have to be concerned about the fact that you cannot let be wandering here. You cannot let the egg still go in right in there. As speed we ask him, look at that. यहाँ पे जाते हैं he just trying to charge him, gonna take out the egg as well. He can survive करना बहुत because his head on HP obviously goes on at the hand of Terror Blade. He doesn't have much, but they're just not obviously यहाँ पे team random के पास काफी HP रहती है, काफी प्लेयर survive कर रहे हैं, and they are gonna risk the fact कि के पास take fourth it out and maybe try to find the fifth. Unfortunately, Sky जो सबसे मेजर कंसर्न रहता था कि Centaur War Runner went down very quickly and followed by Phoenix X wasn't pulled off, तो उसकी वजह सारा का सारा जो एक टेम्परामेंट था वो टीम रैंडम की तरफ चला गया था. डेफिनेटली काफ़ी अच्छी फाइट थी दोनों टीम्स ने. मैं क्या तो कहूँगा प्योर लॉस किसी टीम का नहीं हुआ क्योंकि टीम वुफर्स जो थे उनका टेरर ब्लेड आखिर में तो ज़िंदा रहा और फिर दूसरी टीम का कैरी टीम रैंडम का कैरी ट्रोल वॉरलॉर्ड इन दी एंड वो फॉल कर चुके थे. सो डेफिनेटली टीम रैंडम ने काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड गेन किया उस फाइट पे, 4 हीरोज़ को मार दिया, लेकिन वो टेरर ब्लेड को निकालने में कामयाब नहीं हुए और टेरर ब्लेड ट्रोल वॉरलॉर्ड पे किल देते हुए फाइट से बाहर निकल गए. तो इतना ज़्यादा बुरी सिचुएशन दोनों टीम के लिए नहीं थी. तो अभी भी गेम एक तरह से स्टेलमेट की तरफ है डिस्पाइट नेटवर्थ टीम रैंडम की तरफ जा रही है क्योंकि सेंटोर वॉर रनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इवन इन इनिशिएशन, बिकॉज एज सून एज वो इनिशिएट करते हैं तो उनके ऊपर फ़ौरन एक साइलेंस और फ़ौरन रिकाउंटर इनिशिएशन हो जाती है. Here comes the summit, given enough time for Earth Spirit to out. Magnus of Pangolier की थी उसको बचा. Pangolier is like a diffuser. It's straight against Centaur, especially manner than उसको slow कर देना. Other than ultimate use हो जाती है, he's basically the whole fight. He's not able to get out with the silences coming left and right, stunned with the help of Pangolier. Magnus का stun रहता है. It's difficult for him to survive. यहाँ पे कोशिश करते लेके आने, he was not able to do the Centaur Warren gets, and now especially in the mid and the bottom might try to push towards the fact कि यहाँ पे bottom की side शान भी आया है. The team random, despite the fact, not despite the assist के advantage, net worth advantage, उनके पास control भी काफी ज़्यादा रहने वाला tier 2 लेके, लेकिन डेफिनेटली वो रुशान भी ले सकते हैं और पोर्टल को वो लोग यहाँ पे वॉट भी लगा सकते हैं. They trade out this tier 2. I think it will end up with them huge fight. ओह एक्चुअली टीम रैंडम आई थिंक रोशान की तरफ जा रहे हैं. कीपिंग इन माइंड आरजी जो आपने बात की है 6K नेटवर्थ की, तो ये एक्चुअली आई थिंक ये 10K नेटवर्थ लीड है बिकॉज जैसे अगर आपने नोटिस किया हो फिनिक्स के पास सिर्फ एक माइडस मौजूद है और अर्थ स्पिरिट भी उन्होंने भी एक ब्लेड मिल और माइडस बनाया हुआ है. तो टीम फाइट एज फार एज टीम फाइट्स आर कंसर्न तो वो दो माइडस तो कुछ भी नहीं करते उन दो हीरोज़ के लिए. तो अभी उन दो माइडस की इफेक्टिवनेस अभी सामने नहीं आई है और ये चीज़ मुझे सरप्राइजिंग लग रही है कि स्काईराथ मेज ने एक एथर लेंस बनाया है. डेफिनेटली एक आइटम जो आप उस पर बना सकते हैं, लेकिन आई थिंक काफ़ी लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि टीम वुफर्स जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए सपोर्ट्स का वो टेरर ब्लेड को ज़िंदा रखने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो कि हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि उस चीज़ को प्रायोरिटी वो दे रहे हैं फ़िलहाल. Not just, I think the major concern has been for supports for them. All of the fires have been pull off होता हुआ. Skyraths भी जल्दी eliminate हो रहे थे. So team random changes strategy of this as we'll ignore terribly and we're going to take everyone out. Centaur War Runner is not proving to be so strong कि उसको वो खड़ा हो सकता है सबके दरमियान में. That's why I think he's going to go for the BKB as well. That's a great not going for the BKB, but look at that, they're just going to be चाको वो बाहर लेके
लेके आ चुके हैं स्क्वायर करके, and maybe they can with a lot of damage coming in from Mage and Phoenix, they're able to trade him out, or the team has to go. और वही वाली बात है, साथ में ग्रिमस्ट्रोक भी एक्चुअली यहाँ पर फॉल करते, ओह नेवर माइंड, लोटस उन्हें एक इस्तेमाल कर लिया और बोल्डर को भी डॉज उन्होंने कर लिया, काफ़ी बेहतरीन डॉज था वो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हमें नज़र आए थे ये मैग्नस, जो कि एक सेंटोर को कैच करने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके पास एक इंस्टेंट स्टन है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कमबैक पोटेंशियल की, वो चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज टीम वूफर्स का हाई ग्राउंड डिफेंस जो है फीनिक्स, अर्थ स्पिरिट, सेंटोर, स्काईराज, मेज, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर्टिकुलरली टेरर ब्लेड के अगेंस्ट भी, बिकॉज आप टावर को एक सिंपल इल्यूजन के साथ होल्ड कर सकते हो, और मीनवाइल आप अपनी सारी स्पेल्स, इनकी सारी स्पेल्स बहुत स्पैमेबल हैं। तो टीम रैंडम को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। डेफिनेटली एजेस भी है, लेकिन अगर आप हाई ग्राउंड जा रहे हैं तो परहैप्स टियर 4 को डाइव करना इतना सूटेबल प्ले नहीं है। I think that we need to be concerned about is the later. I think with the Phoenix farming the way with the first Midas रहने वाला है, but he still like has a huge net worth advantage over supports. So उस लिहाज से the team is probably looking to end this game within next 10 minutes. Otherwise, with the Phoenix getting the next item, that will be difficult. Like look at that. यहाँ पे थोड़ा सा get that है. Okay, did he just pull off a big completely and utterly useless एक हमें नजर आई थी तरीका उनकी तरफ, बट साथ साथ पैंगोलिया कोशिश कर उनको चार्ज अप करने के लिए। ओके, ही इज व्हाट्स हैपनिंग, वेयर वाज द मैग्नस गोइंग? काफ़ी ज़्यादा डैमेज फिनिक्स को, आई थिंक वो अल्टीमेट एटलीस्ट बेट आउट कराने की कोशिश कर रहे थे, बट मीनवाइल टियर 1 टावर भी चले जाता है, एजेस भी मौजूद है, टेरर ब्लेड डेफिनेटली अपना फार्म कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 300 CS मौजूद है उनके पास, मोर देन 10 CS a minute, I think around 12-13 CS per minute है उनके पास। उनकी स्काडी भी कंप्लीट हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेरर ब्लेड है। तो जैसे कि आपने आरजी मेंशन किया कि अगले 10 मिनट में वो कोशिश करेंगे गेम को ख़त्म करने के लिए, और ये टाइमिंग जो है इनकी, ये एजेस के साथ टाइमिंग बहुत ही क्रूशल है। बट अभी मीनवाइल एक टीम फाइट शुरू होते हुए नज़र आ रही है, दोनों टीम से इनिशिएट कर दिया, मैग्नस ने सेंटर वॉर्नर को ग्रास भी कर लिया, और ये एक एग भी निकलता है, ये परहैप्स पहला सक्सेसफुल एग होगा। स्काईराज में ही फॉल करता है, और दोनों टीम रैंडम जो है वो इस तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एजेस भी अब वापस आ गई, और टेरर ब्लेड अब थोड़ा से ट्रैप्ड हो गए हैं। यहाँ पे आरपी भी नजर आती है, 2 हीरोज को कैच करती है, अर्थ स्पिरिट ट्रैप्ड हो जाते हैं, वो भी फॉल करते हैं, टेरर ब्लेड भी फॉल कर रहे हैं, और फीनिक्स के पास कहीं जाने का जरिया मौजूद नहीं है। टीपी आउट करने की कोशिश उनकी नाकाम, एंड फुल टीम वाइप हमें नज़र आ रही है, और टीम रैंडम की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आरजी, ग्रिमस्ट्रोक और मोर्टा उनके सपोर्ट्स ही फॉल करते हैं। एंड विदाउट द बाईबैक्स, विदाउट एटलीस्ट काफ़ी सारे बाईबैक्स, आई वुड से ये रैक्स या एटलीस्ट ये टावर भी चले जाएगा। इनफैक्ट एक्चुअली नो, इनका डैमेज इतना ज़्यादा है कि वो शायद वो रैक्स ही निकाल के जाए। It is super good against Rax as well. Magnus करने की कोशिश की थी, but no, they have to get out as well क्योंकि they have been able to defend. Oh, look at that! They're just trying to have it. He has to pull off BKB, but I think the better solution right is to get out. Everybody's got next few seconds. They are able to out 7 kills तक मिल जाती. That's a great kill for Sector Warner. Finally able to catch a break. Game early में जो उनको advantage मिला था, उसके बाद से he was being the fact that Warner को ability जल नहीं थी, but I'm glad he's able to pull it off. अब यहाँ पे ये हमें celebrate बना a great item against all Warlord. Obviously like ultimate उसमें रोक सकते हो, so that can work really well. And the next item we can deal a lot of issue for Muerta, for Grimstroke, and just start charging up towards support with ignoring Warlord and Magnus at the same time. So this is a great item for Warner, but यही बात है कहीं ना कहीं उस आपकी ये जिस थी, it worked out in the end for team. They were able to get a team wipeout. उन्होंने tier 3 भी गिरा चुका है एक और, and the next fight should be going to go into the favor of random team. We will have a very long match in the favor of team Woofer. वही वाली बात ये है कि that team is slowly steadily building up item each one of their cores. तो वो भी एक चीज़ मुझे बेहतर नजर आ रही है। जी बिल्कुल आरजी, क्योंकि एक चीज़ हमें नज़र में रखना ज़रूरी पड़ेगा कि जो इंटायरिटी ऑफ टीम रैंडम की जो
टीम फाइट थी ज़रूर, वो टीम फाइट काफ़ी बहुत ही हाई ज़्यादा मार्जिन से वो जीते हैं, लेकिन वो टीम फाइट पोटेंशियल तभी आया है जब ट्रोल वॉरलॉर्ड रिस्पॉन या फिर एजेस के ज़रिए रिवाइव हुए थे। बिकॉज आपने अगर नोटिस किया हो तो टीम फाइट की शुरुआत में ही ट्रोल वॉरलॉर्ड को निकाल लिया था। एक बेहतरीन एग हमें नज़र आया था सेंटोर वॉरलॉर्ड की तरफ से, एक बेहतरीन इनिशिएशन नज़र आई थी। ट्रोल वॉरलॉर्ड इंस्टेंटली फॉल कर गए थे। तो टीम रैंडम को बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा इस चीज़ से कि उनके ट्रोल वॉरलॉर्ड पे किल पोटेंशियल टीम वुफर्स का बहुत ही ज़्यादा है, पर्टिकुलरली बिकॉज ये टेरर ब्लेड ने काफ़ी ज़्यादा फार्म कर लिया है। सेंटोर वॉरलॉर्ड का अब जैसे कि आपने मेंशन किया था हैल्बर्ड भी बन चुका है और फिनिक्स के भी आइटम्स अब आ रहे हैं। तो ये चीज़ उनको नज़र में रखनी पड़ेगी अपनी कि ट्रोल वॉरलॉर्ड को कैसे ज़िंदा रखना है, पर्टिकुलरली बिकॉज इवन दो टियर 3 टावर उन्होंने ले लिया है, उनका रैक्स अभी भी मौजूद है। यहाँ पे they're gonna go for the shot, उनको मिल जाएगा। Obviously we're gonna go the pause, like pause हो जाएगा, Pangoli disconnect हो चुकी है उनके ping के। I'm quite I'm hoping that fix really soon. At the same time, we have a bit more advantage on the side of as you mentioned team random. एक वो चीज़ बात रहती है दूसरी तरफ से the good thing for that fight was that if we didn't have on the side, we saw the pulling off. And now the concern is with a lot of damage coming from the team Woofer side during that team entire set of war and ultimate and Earthspit just diving in rollerboard and obviously with the refraction and the hit, there's a lot of damage that team random has to be careful about. उसी वजह से troll cannot tank any of it. Magnus RP देने के बाद he is very to do something useful. Pangolier can also take a lot of damage during his ultimate. वो Centaur की वो sorry terrible की hit वजह से. This is a very short span of time for team random to pull off something. The longer they take this fight, the diff will be so that BK ultimate for the key area where 1 or 2% and get them out. If they're not able to do that, this is it for them. बिल्कुल, और जैसे कि आपने मेंशन किया, ये सारी चीज़ें का ख्याल रखना पड़ेगा टीम रैंडम को। 7K नेटवर्थ लीड हमें नज़र आ रही है, जो कि इतना ज़्यादा मायने रखती नहीं है इस स्टेज ऑफ द गेम में। बिकॉज लाइक जैसे कि हम बात कर रहे थे, दोनों टीम वूफर्स का भी काफ़ी ज़्यादा फार्म आ गया है, टेरर ब्लेड भी काफ़ी ज़्यादा फार्म हो गए हैं, सिल्वर एज की तरफ जा रहे हैं वो। और मीनवाइल एक और इनिशिएशन नज़र आ रही है, ट्रोल वॉरलॉर्ड इंस्टेंटली टेक आउट हो जाते हैं, पैंगोलियर अपनी अल्टीमेट इनिशिएट करते हैं, लेकिन टीम रैंडम का फाइट पोटेंशियल ज़्यादा नहीं रहता। टेरर ब्लेड का मेटामॉर्फोसिस भी एक्टिव है, अर्थ पैंगोलियर कोशिश कर रहे हैं अर्थ को वो निकाल लें और सीधे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इनफैक्ट मैग्नस की आरपी भी आती है, टेरर ब्लेड वो फाइट टर्न अराउंड कर देते हैं, फिनिक्स विल फॉल, टेरर ब्लेड भी काफ़ी लो हो चुके हैं एंड इफ टेरर ब्लेड भी गिर जाएंगे, अर्थ फाइट को रिजॉइन नहीं कर सकते, स्काईराट मेज भी चले जाएंगे, अर्थ हैज़ टू लीव, सेंटोर वॉरलॉर्ड भी जा चुके हैं। तो टीम रैंडम एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट को टर्न अराउंड उन्होंने किया है। ट्रोल वॉरलॉर्ड, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ट्रोल वॉरलॉर्ड को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इंस्टेंटली आरजी एक सेकंड भी नहीं लगा ट्रोल वॉरलॉर्ड को फाइट से निकालने में, और मुझे तो यही लगा था कि उनका सारा का सारा फाइट पोटेंशियल चले गया है, बिकॉज इवन पैंगोलियर कुछ फाइट्स में अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैग्नस की एक ब्रिलियंट आरपी आई थी और फिर फाइट पूरी टर्न अराउंड हो गई। टेरर ब्लेड में सरेंडर नहीं निकाल पाए थे और टेरर ब्लेड इन दी एंड फॉल कर जाते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा लॉस टीम वफर्स को फेस होता है, टियर 2 टावर भी उनका गिर जाता है। And one thing जो team random they are doing perfectly great, somewhat dividing among the team. We were like there's less damage in terms of forward goes down by Pango ultimate, and obviously it is a lot of damage. Don't get me wrong, super great against their supports and against their laner, mid laner, against their off laner as well. But somewhat the decision to just look at outcome is not based on utility. Actually damage is super great. He BKB यहाँ पे eco saver रहता है, into the next titan
second, or he's going for the next item. His great hits, यहाँ पे shadow bullet बना with an empower on Muerta, so dealing a certain amount of damage. So even if your troll warlord is in Pango is not able to deal a lot of damage, you still need to be careful about the fact that Muerta with her ultimate and Magnus अगर RP के साथ लेके जा सकता है. We saw even after taking the troll warlord, RP लग जाती तो क्या होता, and we saw that Magnus just turned the gears like okay, I also is able to deal a lot of damage and ठीक है मुझे भी सिर्फ साइलेंस और उसके ऊपर गेम नहीं खेलनी. I also need to deal a lot of damage and this thing guys was super great and now they've been able to pull off the ages. ages लेने के बाद team Woof ने यहाँ पे smoke to have to go back because obviously ages से खिलाफ करना is just not a great idea. मीनवाइल टीम वफर्स स्मोक पे फिर भी अभी भी इंतजार कर रहे हैं. सेंटर ऑफ वार्डन वापस इनिशिएट करते हैं. ट्रोल वार्डन को नहीं मार पाते वो. ट्रोल वार्डन ने अपने अल्टीमेट एक्टिवेट कर दी. बीके भी एक्टिवेट है और एक ब्रिलियंट आरपी नजर आ रही है और टीम वफर्स फॉल कर रहे हैं. टेरर ब्लेड अब बिल्कुल ट्रैप्ड हैं और उनके पास जाने का कहीं रास्ता नहीं है. वो अपना सैंडर एक्टिवेट तो कर लेते हैं लेकिन ट्रोल वार्डन को फिर भी नहीं मार पाएंगे. ट्रोल वार्डन ने सैटेनिक अपना एक्टिवेट कर लिया था और एजिस भी अभी भी मौजूद है. एंड इनफैक्ट स्काईराज में जी फॉल कर लेते हैं. आरजी वो ये फाइट तो एक बहुत ही डिज़ास्टरस टीम वुफर्स के लिए हुई. मुझे नहीं पता वो उन्होंने ऐसी इनिशिएशन क्यों की बिकॉज वो ट्रोल वॉलर को एक दफ़ा मार तो देते लेकिन दूसरी दफ़ा नहीं मार पाते. उनकी एबिलिटीज़ सिर्फ एक ही दफ़ा काम कर सकती हैं. स्काईराज की अल्टीमेट होगी. सेंटोर वॉलर ने एक दफ़ा ब्लिंक इन कर दिया तो कर दिया. ट्रोल टेरर पे का मेटामॉर्फोसिस उसने अपनी पोजीशन रिवील कर दी तो टीम रैंडम को पता होगा कि वो उनको कैसे मारना है. और अब ये मेगा क्रीप्स की तरफ चले जाएंगे. कोई टियर 3 टावर नहीं है. स्पॉन होने में 20 सेकंड तकरीबन रहते हैं और ये शायद गेम ख़त्म होने जा रही है. You're very right about the fact that even if you were to all warlord out, एक मसला ये how you do take him out. You need for you need a spirit to be in a vulnerable position because he आगे तरफ होते हैं और this spot Phoenix as well of they take him. That's a good kill for team randoms as they to completely take the base away and उसके साथ just moments before this game is over. But coming back to that fight, Talha, something like what were you thinking? Will you take out Troll Warlord? If yes, you will make sure the Centaur Warlord and Earthspread is in a will get an RP, and if right there next to them, that's just point. वही होता है कि unfortunately we didn't get to that fact. Oh, you're able to take Troll Warlord ages out. Troll Warlord survives, and now that's the thing. Was survive with ages, with BKB, with Satanic. He is just crazy, and obviously his ultimate you cannot take down. कोई भी उसको नहीं eliminate कर सकता था. Tablet has a chance, but with a lot of spells just being left on the side of Team Random, it was quite easy for them to take this fight as long as he was able to pull off that. Definitely, और इन पर्टिकुलर वो जो एक बहुत ही ब्रिलियंट आरपी हमें नज़र आई थी लॉल की तरफ से, तो वो जो उसने तो फाइट को कम्प्लीटली सील कर दिया था. और अब एजेस पे 2 मिनट मौजूद हैं. हेक्स भी बन चुका है. स्मोक अप हो चुके हैं और गेम का आई थिंक आखिरी लम्हे हमें नज़र आ रहे हैं. मैग्नस ने स्क्यूअर किया है स्काईराथ मेज को. स्काईराथ मेज ने बाय बैक कर लिया है और अब वापस एक इनिशिएशन सेंटर ऑफ वॉर्नर वापस कोशिश करते हैं उन पे इनिशिएट करने की. लेकिन अगेन पीकेबी एक्टिवेट हुआ हुआ है. ट्रोल वॉर्लॉर्ड का अल्टीमेट भी उसने खोल दी है और सेंटर ऑफ वॉर्नर भी फॉल करते हैं. उनका भी इंस्टेंट बायबैक आता है. टेरर ब्लेड भी अब फॉल कर जाते हैं. उनके पास बायबैक मौजूद मेरे ख्याल से नहीं है. 3 हीरोज़ फॉल कर चुके हैं और अब टीम वफर्स के पास कुछ है नहीं और जी कॉल नज़र आ जाती है हमें. Simple things. That has been the reason. I think in terms of pick, you cannot go like, oh, they had the way they into the game. That was particularly back. Congratulations to them. They deserve winner of the month to the game. So we have a lot of actions left. Definitely, साथ साथ देखें तो Tultras, it was more like a chance went to team Trollwart in terms of advantage. It was not like, oh, this is a team that is in better position and there is the Roshan as well. It was maybe some good amount of advantage that was created from their side, and obviously they were capitalizing on that fact. Roshan would give a
Roshan was much more important. Did turn away the game on that. The first team fight, team random was also based on the first Roshan, the Roshan, and they were always given to pull it off on Troll Warlord. और जब आपको याद हो कि Troll Warlord had eliminate हुआ था, it turned out, it looked like oh they are right, but with the age back and army being pulled off after the ages, it was turned around. तो वही वाली बात ये है कि team somewhat एक confidence, एक mindset के अंदर issue नजर आता है कि okay you contest that ages, and if you're not contesting that ages, you need to respect the fact that okay you defend the high ground and you let them with somewhat of an advantage. Other than the fact you went directly with the ages, that was a bit concerning. So उसके साथ साथ you the way team adapted to the fact okay if Troll goes down in the worst case scenario like the top जो fight we need to make sure two of our they deal damage if Troll Warlord goes down, and with the click build on both of those players that worked out really great. डेफिनेटली आरजी आई थिंक ये जो आखिरी फाइट हमें नज़र आई थी एक्चुअली सेकंड लास्ट फाइट जिसमें उन्होंने ट्रोल वॉरलॉर्ड के ऊपर इनिशिएट किया वाइल ही हैड द एजेस, शायद वो थोड़ा सा वेट कर लेते. आई थिंक उस फाइट ने पूरी गेम को सील कर दिया था. उसके बाद वो मेगा क्रिप्स हासिल हो गए थे. लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट गेम हमें टीम ऑफर्स की तरफ से नज़र आई थी. कम बैक पोटेंशियल डेफिनेटली मौजूद है. थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है एंड होपफुली हम एक गेम 3 की तरफ भी जाएंगे. लेकिन उससे पहले हम एक नेक्स्ट गेम देखेंगे उसमें क्या होता है. बट उससे पहले हम सिर्फ एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं. Let's do this, Abu Dhabi! Let's do this, Abu Dhabi! Let's do this, Abu Dhabi! Let's do this, Abu Dhabi!
karma. That's just karma. Too hard and late. Say your last goodbye. Oh, come back, come back. I didn't mean to, I don't want that. That's just karma. Hello everybody and welcome back to Arena Esports powered by Etisalat by EN जहाँ पे strategic partner AD Gaming and broadcast partner हमारे पास प्लूटोनिया रहते हैं मैं हूँ आरसी और एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया है टिल्टस ने टिल्टस we are done with the game number 1 जहाँ पे team random ने एक wonderful victory लेके गए थे अपने नाम they had some great players some great mindset and the great adaptability to the game क्या expressions आपकी क्या तासुरात हैं Hello, Tiltrus. Can you hear me? Can you hear me? Hello. Sorry, RZ. I think कुछ technical issue मेरी तरफ से थे. I couldn't hear you. But RZ, what a game. I don't know what you were saying before this, but hopefully you were talking about, आपके जहन में वही चीज़ चल रही थी कि what a game. इतनी action packed game हमें नज़र आई थी और and in the end आखिर में जाके सिर्फ ब्रिंक पे गेम ख़त्म हुई एकदम से मैं बोलूँगा कि काफ़ी एंटी क्लाइमैक्टिक एंड हमें नज़र आने को देखा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा सेंसिबल टीम फाइट परहैप्स वो देंगे परहैप्स वो वेट करेंगे उनका हाई ग्राउंड आने का बिकॉज उनके इतनी ज़्यादा स्पैमेबल एबिलिटीज़ मौजूद थी लेकिन दे चोज़ के बेस के आउटसाइड उनको एक फ़ाइट लेनी चाहिए अगेंस्ट एन एजिस और इन दी एंड वो कामयाब नहीं हुई तो आरजी आपके इसके बारे में क्या ख्याल है I think it was more of a जिसे कहते हैं ना जल्दी में कॉल थी वो वाली विदाउट गिविंग इट मच थॉट एज वेल उसकी खास वजह यही रहती है कि दे वर ऑलरेडी स्मोक्ड अप ट्राइंग टू टेक अ फाइट व्हेन ट्रॉल पुल्ड ऑफ द एजेस and they were standing on the high ground towards the radiant jungle and they're like oh we see tall warlord let's just dive on him and they didn't give it much thoughts कि how did exactly will turn out अगर एजेस चली गई फिर क्या होगा what is our escape route can we kill troll 2 times and even if we kill troll 2 times how much are we committing to the fact that will we able to pull off a team vibe because this is it the fight so that was the major issue that last fight was taken without much of the thought and that call was really I would say made in poor sense other than the fact I think generally Team Random they played it wonderfully they knew when to capitalize on the fact कि उन्होंने Aegis के साथ काफी fights ली थी and they won on that and they had a plan even if they don't have the Aegis what is the plan so the plan A B C the way Team Random played it I think they were just a bit ahead in terms of their game plan डेफिनेटली और काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक गेम जैसे कि आपने मेंशन किया काफ़ी सिस्टमैटिक गेम हमें नज़र आई थी टीम रैंडम की तरफ से ऑब्जेक्टिव बेस्ड गेमिंग जिसको हम बोलते हैं उनको पता था कि उनकी विन सिनेरियो क्या है उनको कब ग्रुप अप करना है कब फाइट करना है एजिस के साथ हाई ग्राउंड उनको जाना है बार बार टेरर ब्लेड को शट डाउन कर रहे थे बार बार वो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि उनके अगेंस्ट थ्रेट सबसे ज़्यादा कौन सा है सेंटोर वॉर रनर को शट डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे वो और फाइट्स लेने में भी और ट्रोल वॉर्लॉर्ड को जैसे कि हमने मेंशन किया था उसको ज़िंदा रखने में भी काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुए थे और यही हम टीम फाइट्स में हमें नज़र आ रहा है उनकी इनिशिएशन बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक नज़र आ रही है हमें और देख रहे हैं कि किस पर इनिशिएट करना है किस तरह इनिशिएट करना है इंक्सवेल के ज़रिए वो इनिशिएट करते थे बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से और सेंटोर वॉर रनर अमूमन अक्सर सिर्फ फाइट्स में इधर उधर हमें भागते हुए नज़र आए थे और इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे परहैप्स अगर उनके पास एक दो और आइटम होते या वो इतनी बुरी तरह शट डाउन नहीं होते अर्ली गेम में तो वो और सक्सेसफुल होते इस फाइट में हमें नज़र आया था कि टेरर ब्लेड तो निकल गए थे फाइट से
और ट्रोल वॉर्लॉर्ड को मार के, लेकिन गेम आहिस्ता आहिस्ता टीम वुफर्स से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, पर्टिकुलरली इस वक्त पे जब ट्रोल वॉर्लॉर्ड्स की एजेस गई है तो उनके पास अब फाइटिंग मैकेनिज्म वक्त बाकी नहीं है। और अभी देखेंगे मैग्नस की एक आरपी भी आती है टेररब्लेड की तरफ, और टेररब्लेड कॉट आउट हो जाते हैं, उसमें संडर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन ट्रोल वॉर्लॉर्ड की अल्टीमेट के थ्रू वो फॉल कर लेते हैं। तो आई थिंक इस सिनेरियो में इस टाइम पे 25 मिनट्स पे गेम टर्न अराउंड हो जाती है। And more importantly, you look at the fact that, okay, where are they going right now? And sometimes it feels like, okay, they are not always going in on Troll Warlord. They are targeting some different players. So it was always, almost always, some different players going down. Either it was Phoenix, either it was Centaur Warren, and then the third person was almost Terrorblade. We saw that in the last fight as well. और जो हमारे सामने fight हो रही है उसमें भी नजर आया कि okay, who was the first person to go down? It is either Phoenix, it is either Centaur because obviously he's in a bad position, he got skewed. But this was the major question: okay, what exactly was he able to do? And he was able to pull off the BKB. I don't know how exactly he dispelled something. There was something given to him on the other side, but he was able to pull off the BKB. उसके बाद इन्होंने ultimate pull off की, the satanic was being pulled off as well, and he didn't die during all this fight. And the decision went for that, I think that was really questionable. And afterward, this was just the skewer जो कि उनको लेके आया था, and it was easy win and easy fight from there. And obviously यही हुआ था कि the Magnus just took Skyrath match buyback करके भी आए थे, but in the end what exactly are trying to achieve? A Troll Warlord को अब इतना आपके पास damage था नहीं कि take him out in the stun. And as well as for you talk about the silence of Skyrath mage, you talk about the silence of Earth Spirit, it's not that much. तो वही वाली बात थी कि you cannot exactly nail down Troll Warlord. He has 3000 HP. You have one stun, and then that's it. डेफिनेटली ट्रोल वॉर्लॉर्ड को आप कितना ज़्यादा सीसी डिश आउट कर पाएंगे इवन अगर टेररब्लेड फार्म कर लेता है। और जैसे कि हम मेंशन कर रहे थे कि टेररब्लेड इस मेटा में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। पहले ये होता था कि टेररब्लेड का बहुत ज़्यादा फार्म हो जाए, 5 स्लॉट हो जाए, 6 स्लॉट हो जाए, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कैरी गेम में था नहीं। इवन आई वुड से कि वो मेड्यूसा का जो ज़माना था तो टेररब्लेड उससे भी ज़्यादा पावरफुल थे। आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरीज रह चुके हैं टेररब्लेड, लेकिन वो इस मेटा में, इस पैच में वो चीज़ नज़र नहीं आती। ट्रोल वॉर्लॉर्ड को अमूमन हमने देखा है कि गाइड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बट इस गेम में उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके पास लॉकडाउन एबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, मैग्नस से काफ़ी अच्छा प्ले किया था। वो आरपी उन्होंने जो लैंड की थी अपनी गेम, अपनी टीम को गेम उन्होंने एसेंशियली जितवाई थी। और अब हम स्कोर बोर्ड की तरफ देखेंगे तो नज़र आएगा हमें कि ट्रोल वॉर्लॉर्ड इनफैक्ट सबसे हाईएस्ट नेट वर्थ उन्होंने अचीव की थी। एंड इनफैक्ट पैंगोलियर ने भी काफ़ी अच्छा मुजाहिरा किया, 9-2 एंड 19, सिर्फ 2 डेथ पैंगोलियर की नज़र आई। वो एक ऊपर टीम फाइट पे हमने देखा था और एक अर्ली गेम में आई थिंक पैंगोलियर ने एक दफ़ा मरे थे, लेकिन उसके अलावा सिर्फ 2 डेथ्स। तो काफ़ी ब्रिलियंटली पैंगोलियर ने भी खेला था। और बाकी अब अगर आप असिस्ट की तरफ देखें तो जो पूरी की पूरी टीम है, इससे यही पता चल रहा है कि वो ज़्यादातर सारी उन्होंने टीम फाइट्स ही दी हैं। बिकॉज इवन दो ट्रोल वॉर्लॉर्ड के 11 असिस्ट हैं, उनके 12 किल्स हैं और बाकी टीम के अराउंड 20 ही असिस्ट हैं। तो पूरी की पूरी टीम इकट्ठे ही खेल रही थी। जैसे कि हमने देखा था ट्रोल वॉर्लॉर्ड की जैसी बैटल फ्यूरी बनाए, उनकी याशा भी कंप्लीट नहीं हुई है और वो फाइट्स को ज्वाइन करना शुरू हो गए थे। यही एक डाउन साइड होती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें वूफर फैंस के लिए, इवन दो टेररब्लेड का मांटा स्टाइल काफ़ी जल्दी बन गया था, इवन दो लास्ट हिट्स में वो सबसे ज़्यादा आगे थे, नेटवर्थ में सबसे ज़्यादा आगे थे वो शुरू में, लेकिन वो एक 4 प्रोटेक्ट 1 स्ट्रैटेजी इस मेटा में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होती बिकॉज आप टीम फाइट्स को ज्वाइन नहीं कर पाते। और ये मेटा इंटायरली मिड गेम मेटा की तरफ चल रहा है जिसमें टेररब्लेड जैसे हीरो कामयाब नहीं होता। And you look at that fact, okay, so you have Terrorblade who has 400 CS. Now he has everything that he needs, and right now he's at the top. But when you compare it to, okay, you have Troll Warlord जिनके 350 creeps है, then you have Magnus right behind him with 260, 270 creeps, who has like only 4k, 5k net worth difference from your carry, which you don't usually see because carry generally is like 20,000, 10,000, 15,000 के difference होता है अपने support वो है। Then you have an off lane Magnus जो कि उनके बिल्कुल पीछे खड़ा है in terms of taking creeps, in terms of net worth, in terms of
He's just contribution to छोड़ दे. Then you have Pangolier that also has good amount of creeps, also good amount of net worth. You have three players more than 20,000 net worth, and then you look on the other side. You have only one player that is doing relatively good. That is Terrorblade. That is not like, oh, you, this is super great. Terrorblade का farm आ चुका है. I think anybody can get the carry to farm. But the major concern was, okay, you're mid Earth Spirit was doing relatively okay. He had 8 kills, 6 deaths. He had 210 creeps as well. He had certain amount of contribution to the game. Then you look at Centaur Warrunner. He had 11,000 net worth across this whole game, while comparatively double net worth on Magnus, much more contribution in terms of much more pressure across the map, better farming capability, and Centaur Warren वही वाली बात होती थी कि he there were less items on him. He could have used a good BKB if he was pinned down in terms of कोई इसको stun कर देता था. He was in the center. He could not get out. Ultimate मार के initialize करते थे, but he was never able to get out. Obviously, there were a lot of silences as well. So, in terms of you were not able to capitalize on the fact that 4 protect 1 wali strategy will put a pressure on Centaur that he needs to be there for his team, he needs to protect his team, and that could not exactly work that way. But look at that, some same kind of things happening in the game number 2, Tiltrus, or I think RC ये दोबारा एग्जैक्ट सेम सिनेरियो, इवन बैंड्स हमें सेम नज़र आ रहे हैं, पिक्स भी सेम नज़र आ रही हैं. सरप्राइजिंगली वो फीनिक्स की तरफ जाते हैं बिकॉज फीनिक्स का इतना ज़्यादा सक्सेसफुल अल्टीमेट्स हमें नज़र नहीं आई थी. 1-2 फाइट्स में काफ़ी सक्सेसफुल अल्टीमेट्स थी, एंड इनफैक्ट नेचर्स प्रॉफिट चले जाता है हाथों से. तो नेचर्स प्रॉफिट की ग्लोबल प्रेजेंस भी हमें इस गेम में नज़र आएगी. वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे ताकतवर सपोर्ट चल रहे हैं वो नेचर्स प्रॉफिट ही हैं, और इनफैक्ट वो कोर रोल में भी खेले जा सकते हैं. पर हम देखेंगे कि टीम रैंडम उनको कैसे खेलेगी. ग्रिम स्ट्रोक की भी प्रेजेंस है, बट इन डिस्पाइट के ग्रिम स्ट्रोक लास्ट गेम में भी इतने ज़्यादा अल्टीमेट को यूटिलाइज़ करने वाले एबिलिटीज़ नहीं थी उनके पास. परहैप्स ये इस गेम में थोड़ा सा डिफरेंट होगा. बट टीम वूफर को भी एक अच्छी पिक मिलती है, कुंका, जिनका जैसे कि हम देख रहे हैं एगनिम सेप्टर जो कि है वो बहुत ही ज़्यादा टीम फाइट पोटेंशियल रखता है. कुंका के जो टॉरेंट्स जो चल रहे होते हैं एगनिम सेप्टर के साथ, उसके अंदर फाइट करना विदाउट बीकेबी एक नामुमकिन जैसी बात हो जाती है. तो अगेन कुंका को बर्स्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एक चीज़ जो कि मैं ब्रिंकअप ज़रूर करूँगा टीम वुफर को, मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे कि वो जो डबल माइडस की जो बिल्ड थी, जैसे कि आपने बात की आरजी कि सेंटोर वॉर रनर पे कितना ज़्यादा प्रेशर था, बिकॉज़ एक तो आपकी नेटवर्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर से आपकी टीम ने 2-2 माइडस भी बनाए हुए हैं, उसके ऊपर से आप एक 4 प्रोटेक्ट 1 स्ट्रेटजी भी खेल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ सिनर्जाइज बिल्कुल भी नहीं करती. तो उनको प्रेशर को डिसिपेट करना है. फीनिक्स पे कर ली है तो परहैप्स एक माइडस नहीं बनाया जाए, परहैप्स एक अर्ली अर्न की तरफ जाया जाए, परहैप्स वो ज़्यादा फ़ायदेमंद उनको रहेगा. Definitely, I think that can work in a better way for themselves, and you need, what we have personally witnessed is that you need individual contributors to your team, and you need to let your team spread out as much as they can. So you have a bigger map. Phoenix and Skyrath, they can't do that. They can't do much in terms of being spread out. Nature's Prophet, while being on the other side, position 4, he can do much better on the global level. Muerta also can do solo farm and go start hitting creeps and farm with a bit of more war. अब यही मसला है कि कुंका will have way more advantage. Phoenix will go for a Midas build because he doesn't get creeps as well and he needs to be in a good position. Nature's Prophet, without building the Midas, maybe he'll go for the Midas. He'll just generally he will hit creeps and go I have farm. And Bullsfit as well on this side is a great pick. Can catch out Phoenix, can catch out Skyrath Mage. Kunka की काफी easy dodge भी कर सकता है. Even he can dodge the boat coming in. Everything needs to be perfectly. And generally he can just remnant away out of sticky situations. So Ember Spirit, I think, is a great pick coming from Team Random, and they have a better understanding of how is it going to work out.
डेफिनेटली। और एक रेथ किंग का ऑप्शन भी टीम रैंडम के पास मौजूद है। रेथ किंग प्लस नेचर्स प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होती है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट स्काईराथ और फीनिक्स। जो स्क्विशी सपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो स्केलेटन्स जमा हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट एम्बर स्पिरिट, जैसे कि आपने मेंशन किया, बहुत ही अच्छी पिक पर्टिकुलरली अगेंस्ट कुंका, बिकॉज आपकी मोबिलिटी इतनी हाई होती है और सपोज कुंका ने सेक्टर बना भी लिया तो एम्बर स्पिरिट उससे बहुत ही आसानी से निकल पाएंगे। स्काईराथ मेज का साइलेंस एम्बर स्पिरिट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो सब डिपेंड करता है कि आप इनिशियली एम्बर स्पिरिट को लॉक डाउन कर पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए तो अभी फ़िलहाल सिर्फ एक एक्स मार्क मौजूद है। एक अल्केमिस्ट भी नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली एक कोर अल्केमिस्ट होगा ये। परहैप्स ये शायद सेफ लेन अल्केमिस्ट की तरफ जाएँ। परहैप्स आगे जाके ये सेप्टर अगर अपग्रेड्स देना शुरू कर दें तो फिर टीम रैंडम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उससे। सो अगेन टीम वूफर का सिनेरियो वही बन रहा है कि वो एक दूसरे टीम के कोर्स को किस तरह शट डाउन करेंगे। एंड अगेन स्काईराथ मेज के मिस्टिक फ्लेयर के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। लीजन कमांडर पिक किया जाता है, जैसे कि लास्ट गेम में सेंटोर वॉर रनर था, उनकी कोशिश यही थी कि सेंटोर वॉर रनर के स्टन से स्काईराथ मेज के मिस्टिक फ्लेयर से वो एक हीरो को लॉक डाउन करके शट डाउन कर दें। ट्रोल वॉरलॉर्ड पे कोशिश की और काफ़ी ज़्यादा फाइट्स में ट्रोल वॉरलॉर्ड को शट डाउन करने के सक्सेसफुल भी हुए, बट क्या वो सेम चीज़ रिपीट कर पाएंगे इस गेम में, वो भी हमें देखना होगा। फॉर श्योर टीम रैंडम के पास कुछ ना कुछ तो उन्हें सोचा हुआ होगा इसको काउंटर करने के लिए। Definitely, but Legion Command generally is a great pick. As you mentioned, it can either take on Alchemist or take down Ember Spirit, Nature's Prophet. So, nailing down one hero with his ultimate is obviously a good factor. Team Random needs to think a bit ahead in terms of, okay, what if your one hero goes down? Ab kya karna hai? Do we have enough kind of manpower to just go ahead? लेकिन साथ साथ ban को देखा जाए तो we have some certain bans coming in जो हमने पिछली दफा भी देखे थे। Chaos Knight, हमारे पास Brewmaster, Spirit Breaker, Trained Protector, साथ साथ हमारे पास ब्रिसलबैक, लोन ड्रुइड, ये बैन हुए हैं। बट समथिंग दैट वाज बीइंग बैन्ड डिफरेंटली इस दफा टीम वूफर फैंस ने अर्थ स्पिरिट और अर्थ चिकन वो सेंटोर वॉरनर खुद ही बैन कर दिया इंस्टेड ऑफ पिकिंग देम। व्हाइल आई थॉट दैट माइट जस्ट बी अ useless ban. You could have just went for the fact कि आप Grimstroke ban कर सकते थे। आपको पता था last time it created a lot of trouble especially for Centaur Warren in lane. Centaur के लिए सिर्फ lane के अंदर नहीं, Centaur के लिए game के अंदर भी काफी एक issue बना के खड़ा किया था कि as soon as he landed his first stun he was entirely based useless based off like Grimstroke stun and वही वाली बात है, Grimstroke की ulti का भी अभी time नहीं आया था। तो let's see exactly how it works out. We have the last pick coming in from last ban coming in from team Woofer fans and अच्छी बात team random की रहती है कि they have heroes that can go in any lane. डेफिनेटली दे हैव हीरोज़ जो कहीं भी जा सकते हैं। आप अल्केमिस्ट, इवन एम्बर स्पिरिट को आप सेफ लेन की तरफ भी भेज सकते हो। मिड लेन जाना उसका ज़रूरी नहीं है। अल्केमिस्ट को भी आप मिड लेन भेज सकते हो। नेचर्स प्रॉफिट को आप कोर खिला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। मीनवाइल वूफर फैंस की लाइनअप तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्काईराथ मेज फीनिक्स जो होंगे सपोर्ट होंगे, लीजन कमांडर ऑफ लेन और कुंका मिड लेन। तो टीम रैंडम की तरफ से ऑफ लेन हीरो अभी नहीं आया और वूफर फैंस की तरफ से वो एक इनफैक्ट टेम्पलर असैसिन की तरफ जाते हैं। आई एम नॉट श्योर इस पिक के बारे में, बिकॉज टेम्पलर असैसिन के रिफ्रैक्शन चार्जेस को तोड़ने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एबिलिटीज़ मौजूद हैं टीम रैंडम के पास। तो देखते हैं कि ये पिक कैसे काम करती है। क्या टेम्पलर असैसिन शट डाउन इतनी आसानी से हो जाएगी जितनी आसानी से होनी चाहिए अगेंस्ट टीम रैंडम की लाइनअप? क्या ये वरना वापस से वूफर फैंस उसी तरह से जैसे कि टेरर ब्लेड को फार्म मिला था उसी तरह से टेम्पलर असैसिन फार्म कर लेगी? मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि टेम्पलर असैसिन मिड गेम में बहुत ही जल्दी इनफैक्ट सिर्फ एक दो आइटम के साथ ऑनलाइन आ जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। बिकॉज पिछली गेम में भी क्रीपर जो है उसने फार्म हासिल करने में तो बहुत अच्छी फार्म उसने बहुत अच्छे तरीके से हासिल किया था। हाईएस्ट इन नेटवर्क चार्ट था, हाईएस्ट इन लास्ट हिट्स भी रहा था। सो अगर उसी तरह के से टेम्पलर असैसिन अपना ड्रैगन लांस डेसोलेटेड ब्लिंक डैगर बना लेते हैं और टीम फाइट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं अलॉन्ग साइड लीजन कमांडर, तो
वो हमें एक डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलेगा। और टीम रैंडम जो है उनकी तरफ से एक फार्म ओरिएंटेड मैं बोलूँगा लाइनअप तो ज़रूर है। फैंटम असैसिन, ब्लैक बैटल फ्यूरी, डेसोलेटर, बीकेबी 3 आइटम उसको चाहिए फाइट्स में आने से पहले। अल्केमिस्ट को भी अपना फार्म चाहिए होगा और एम्बर स्पिरिट को भी अपना फार्म चाहिए होगा। तो डेफिनिटली ज़्यादा फार्म डिपेंडेंट लाइनअप हमें नज़र आ रही है टीम रैंडम। एंड मीनवाइल टीम वुफर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ एबिलिटी के बेस पर भी अर्ली गेम में फाइट कर सकते हैं और फिर मिड गेम की तरफ उनके पास जो हीरोज़ हैं उनको इतना ज़्यादा फार्म नहीं चाहिए। Definitely, I think that is a case कि उनको इतना ज़्यादा फार्म नहीं चाहिए होगा. We have a bit of an issue. I think that will be resolved in quickly. But हम दोबारा आते हैं उसकी तरफ. तो we have both teams smoked up. खासतौर पे team random standing at the mid side. बाकी सारी की सारी team Woofers, they are dispersed, trying to go towards the bottom side. I think Rune को contest करना चाहिए. Now, obviously, they're looking for a kill as well. लेकिन with that smoke being put, like dissipated, और साथ ही साथ उन लोगों ने ward भी लगा रहे हैं so that they can catch out if somebody is coming that way, or they will also be catching out rotation for the first 5 minutes that is being made from mid to other side as well. Templar Assassin, great. I think he's generally a good mid against. इज़ गोना बी लाइक उनको फार्म करना थोड़ा सा रोकना मुश्किल हो जाएगा. उसकी ख़ास वजह ये रहती है कि इन टर्म्स ऑफ अर्ली गेम स्ट्रेंथ टीम रैंडम के पास एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ लाइक फैंटम असैसिन, बट फैंटम असैसिन डज जनरली गुड विद 1 or 2 आइटम्स एटलीस्ट, और एम्बर स्पिरिट आल्सो like does good better with other kind of heroes. Nature's Prophet would like to farm, Phantom Assassin would also like to farm, Alchemist would like to farm like for 16 to 20 minutes of the game. So in generally, I think Team Random के अगर हम time frame देखें, the time which they are going to attack lies from the fact that after 16th minute of the game, maybe 18th minute of the game to 24th minute of the game is going to be the crucial factor of Team Random, is they were going to strike the most and it's going to hurt Team Woofers the most. As for the first 16 minutes with a strength carry like Konka, with having Phoenix, Templar Assassin also likes to farm, but General Legion Commander trying to get their duels. We'll see some early aggression coming on the side of Team Woofers. डेफिनेटली एंड अगेन मिड लेन की तरफ हमें काफ़ी एक इवन लाइनअप नज़र आ रही है. इतनी ज़्यादा किल पोटेंशियल दोनों साइड के मेरे पास मौजूद नहीं है. एंड इंटरेस्टिंगली लेवल 6 पे दोनों साइड अपनी HP और मैना रिफ्रेश कर सकते हैं. कुंका एक्स मार करके वापस फाउंटेन जा सकते हैं और एम्बर स्पिरिट भी रेमेंट छोड़ के वापस जा सकते हैं. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप है ये मिड की तरफ और काफ़ी इवन लाइनअप मैं बोलूँगा. बट मीनवाइल हम नीचे देखेंगे, एक्चुअली टॉप लेन की तरफ देखेंगे. फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा लो हो रहे हैं. डेफिनेटली फिनिक्स प्लस टेम्पलर असैसिन इतना ज़्यादा पोटेंट कॉम्बिनेशन नहीं है कंपेयर टू नेचर्स प्रॉफिट and Alchemist. Exactly, and Nature Prophet also is the main thing. Right click damage from Nature Prophet on Templar Assassin plus on Skywrath Mage is great. So that right click damage is gonna be a major concern for the other team. On the other side, he's trying to get a bit aggressive on Ember Spirit. He has to push back. There's a lot of damage जो Tidebringer से आता है और वो he cannot take hits like that. तो वही वाली बात है, he has to walk back, wait for the flame guard to come in. On the other side, there's a lot of magical damage on the both side. वही बात है कि Skywrath Mage needs to be careful. The Grimstroke, as soon as he gets his stun on Phantom Assassin, they can just jump in. But a Legion Commander can dispel it off as well, so it's not exactly that easy for the bottom lane. But look at the other side, Kunkka is just trying to get a bit aggressive, hoping to pull it off, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, and he is going back into the safety. The bottle is going to be coming in, making sure Ember Spirit के पास enough यहाँ पे region हो जाएगी कि वो खड़े होकर अब दोबारा यहाँ पे लड़ सकते हैं. डेफिनेटली दोनों हीरोज़ को बॉटल सेम टाइम पे ही मिलेगी तो दोनों हीरोज़ रिफ्रेश कर लेंगे. एंड मीनवाइल अल्केमिस्ट टॉप लेन की तरफ फर्स्ट ब्लड लेते हुए नज़र आते हैं और बॉटम लेन पे भी फैंटम असैसिन को एक किल मिलती है और ग्रिम स्ट्रोक सिर्फ 30 HP, सिर्फ 30 HP से ज़िंदा रह जाते हैं. थोड़ा सा बैड हो गया टीम वोफर्स के लिए बिकॉज उनका टेम्पलर असैसिन फॉल करती है. मीनवाइल मिड लेन पे एम्बर स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं. वाटर रूम तो वो हासिल कर लेंगे तो HP वापस रीगेन कर लेंगे. बट मीनवाइल स्काईराथ मेज का जब अब उसकी लेवल 1 ऑनलाइन आ चुकी है तो ये
उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज अब वो सिर्फ अपनी एबिलिटी स्पैम कर सकते हैं और फैंटम असैसिन इनफैक्ट फॉल करेंगी। एंड ये एम्बर स्पिरिट को तो बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। एक्स मार्क उन पर लग चुका है, टॉरेंट भी लग चुका है, एंड एम्बर स्पिरिट विल प्रोबेबली फॉल ओवर हेयर। लेकिन कुंका भी बहुत लो आ रहे हैं, एक और स्लाइड ऑफ फिस्ट, लेकिन नहीं, टाइड ब्रिंगर के जरिए एम्बर स्पिरिट को निकाल दिया जाता है। सो दोनों प्लेयर्स बहुत चूज़ कर रहे हैं बहुत ही अग्रेसिवली खेलना, एंड इन दी एंड कुंका ने अपर हैंड हासिल कर लिया और एक टिप भी नज़र आती है उस प्ले के लिए। That was a good side. That was a great thing. He was waiting for that. I think अपनी slide of fist का इंतजार कर रहे थे. But look at that on the bottom side. They're just charging up on Legion, on Grimstoke. He's going to be stunned for some time. But will that be enough to make him survive? And the answer is going to be big yes. Grimstoke यहाँ से निकल जाएंगे. That stunt worked off really well. On the other side as well, Nature Prophet takes a bit of damage, or he has to go back. But look at the things that they have in mind. They're happy with this interaction because in the end it's just Alchemist trying to get a bit more aggressive. Nature Prophet यहाँ पे अपने spells इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर charge up किया जा रहा है. He wants you to dive in. Maybe he'll be able to pull off a kill. लेकिन नहीं, look at that. The turnaround. It was great. It led Phoenix into a terrible situation, terrible place, and उसके ऊपर capitalize किया था. Nature Prophet TP'd out. Wasn't like given enough time कि उनको कुछ damage हो सके. And in the end it worked out perfectly fine. He can just bounce back into the fight. डेफिनेटली फिनिक्स ने वो अंदर जाना, और नेचर प्रॉफिट ने भी बहुत ही अच्छा प्रिडिक्ट किया था, बिकॉज एज सून एज उसने डाइव देखा उसने टेलीपोर्ट का डिसीजन ले लिया, और टेम्पलर असैसिन इतने ज़्यादा करीब नहीं थे किल सिक्योर करने के लिए, और उन्होंने वापसी एक अल्केमिस्ट को किल दे दी। अल्केमिस्ट डेफिनेटली एक ऐसा हीरो है जो कि इतना ज़्यादा ऑफ स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा, मीटियोर हैमर की तरफ वो बिल्ड कर रहे हैं, और अब नेचर्स प्रॉफिट की वो ग्लोबल प्रेजेंस का मुजाहिरा नज़र आ रहा है। टेलीपोर्ट करके एक स्काईराथ मेज पे किल उन्होंने हासिल कर ली है। इंक्सवेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे वो किल उन्होंने ले ली। कुंका मीनवाइल लेवल 6 हो चुके हैं, और एम्बर स्पिरिट को एक और वेव की ज़रूरत होगी, और परहैप्स शायद 1.5 और वेव की ज़रूरत होगी, लेकिन वो जंगल की तरफ जा रहे हैं अपना लेवल 6 सिक्योर करने। लेवल 6 के बाद उनको सोलो निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। Definitely, I think level 6 के बाद pulling off a solo it will be very very difficult. On the other side we have more of an equivalent game happening on either side. Your mid lanes are getting farmed, थोड़ा सा उनके पास advantage रहता है. On the other side Templar Assassin is having a decent time. Nature Prophet is, I think he'll be happy with the way things are. He's able to create a lot of pressure on the offlane. Phantom Assassin के थोड़े से मुश्किलात हो रही है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि exactly where did he go, and more time passes, the more the Legion commander is going to become an annoyance. Obviously, just because of magical damage, just because of the fact he has like a lot of HP, और उसके अंदर वो आराम से कौन से dive भी कर सकते हैं. We didn't count the fact that we have duel Major Phoenix, लेकिन look, never mind. Actually, नहीं, थोड़ा सा वो level 4 है. That was my bad. लेकिन Phantom Assassin in the end स्काईराथ मेज से भी फॉल करेंगे. For some reason मुझे वो 4-6 के बजाय नज़र आ रहा था. Does he go down? No, he doesn't go down. The way he's like basically dodges everything, that was particularly great. Habibi is in a difficult situation. He doesn't have any way out. No mana. He's gonna go down. Oh, he dodges one of that. लेकिन मसला ये है कि exactly कुछ खास नहीं कर पाते. But Phantom Assassin, what exactly are you hoping to achieve? You don't have that much of the damage. और दूसरी तरफ आप देखें तो Kunkka, he has basically a lot of HP, a lot of damage, so it's not exactly a great situation for you. And as soon as that X marks come in, you need to be careful. And with that Tidebringer, he's down to only 30% HP, so that could have been another kill. Good for Phantom Assassin in generally के अब ये थोड़ा सा farm जो mid के ऊपर आया, he can take it away and get himself to the position like level 5. डेफिनेटली. लेकिन अगर हम लास्ट स्टेज की तरफ देखें तो सारी की सारी लास्ट स्टेज टीम वूफर की तरफ जा रही हैं. डेफिनेटली वो एक उनको एक बेहतर मौका है. अगेन ग्रिमस्ट्रोक की तरफ जाया जा रहा है. स्लो हो चुके हैं. लीजन कमांडर के हिट्स आ रहे हैं. इंक्सवेल दोनों की तरफ कनेक्ट होता है. क्या ये इनफ होगा बचने के लिए? लेकिन नहीं, लीजन कमांडर के पास फेस बोर्ड्स मौजूद हैं. स्लो डिस्पेल करते हुए वो उनकी तरफ जाते हैं, और ऊपर टॉप लेन की तरफ मीनवाइल एम्बर स्पिरिट इनिशिएट करते हैं टेम्पलर असैसिन के ऊपर, और वो भी मर जाते थे. दोनों टीम अपने अपने स्ट्रेंथ शो ऑफ कर रहे हैं. एक ग्लोबल प्रेजेंस हमें नज़र आ रही है. एम्बर स्पिरिट प्लस नेचर्स प्रॉफिट, और जो कि इनफैक्ट फिनिक्स के बिहाइंड टीपी करते हैं, वो अभी फाइट
ख़त्म नहीं हुई है। वार्ड प्लेस डाउन होती है तो उन्होंने देख लिया है, फिनिक्स ने डाइव किया है, फिनिक्स के पास टीपी मौजूद नहीं है आई थिंक। 19 सेकंड्स कूल डाउन है उनकी टीपी का और वो यहाँ पर फॉल कर जाएंगे। कितना टाइम वो बना सकते हैं और Oh, फिनिक्स he's आई just थिंक out of the मैप map. से बाहर चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस तो आ He's गए like, I'm वो। out. I really like that idea. Once you don't like it, you are exiting yourself for a dangerous situation. So, guys, this is just a random life advice. You do what Phoenix sometimes does, ignore your problem. But the major concern is like, oh, they're charging up on Phantom Assassin, and that is the reason I was talking about. Oh, he exactly cannot just stay at the mid lane and hope to farm the Phoenix. Kunkka is looking super good right now. He has tanky items. He has phase boots, खास तौर पे साथ, but Portal है साथ. He has like 12 charges. तो उसको रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा एंड ऑब्वियसली नाउ एम्बर स्पिरिट कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम एज वेल एंड वो द वे ही हैज कंट्रोलिंग द बॉटल इट लाइक द रून उनके पास लीजन रून भी आ चुकी थी दैट वाज आल्सो इंप्रेसिव एंड गिविंग कुंका मोर एंड मोर टाइम टू प्रेशराइज टीम रैंडम एंड दैट प्रेशर विल बी मेजर कंसर्न फॉर team woofers as sorry for team random as like ember spirit likes to farm alchemist likes to farm as well on the ये other बहुत side your nature prophet likes to farm डेफिनेटली आरजी, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पॉज हुआ है बिकॉज नेचर्स प्रॉफिट ने जैसे ही टीपी इन किया है तो वो एक डिस्कनेक्ट और एक पॉज आ गया है, तो टीम वूफर्स ने वो टीपी इन देख लिया है। परहैप्स उस पर रिएक्ट करना थोड़ा सा और टाइम लगता, लेकिन क्योंकि फिनिक्स अब इंस्टेंट डाइव की तरफ जाएगा और आई डोंट थिंक अल्केमिस्ट के पास इतनी रेंज है कि वो स्टन लॉन्च कर पाएँ। लेकिन डाइव का भी एक एनिमेशन कास्ट टाइम होती है तो शायद स्टन तो लग जाएगा और ग्रिमस्ट्रोक भी पीछे हैं उनके, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि किल पोटेंशियल मौजूद है यहाँ पर। लेकिन हम अगर बात करें कि किस तरह गेम किस तरह जा रही है, तो जैसे कि आपने मेंशन किया कुंका काफ़ी ज़्यादा अहेड है क्योंकि एम्बर स्पिरिट के पास इतना ज़्यादा कुछ है नहीं फाइट करने के लिए, सिर्फ एक बूट्स हैं। मीनवाइल कुंका के पास आई थिंक तकरीबन 2500 क्लोज गोल्ड मौजूद है। वो ब्लेड मिल की तरफ भी जा सकते हैं, सेप्टर की तरफ रश कर सकते हैं। वो लीजन कमांडर का ब्लेड मिल बन चुका है। तो टीम वूफर्स बहुत ही जल्दी अगले 2 से 3 मिनट में ऑनलाइन आने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे ऑनलाइन आकर, लीजन कमांडर्स को कितनी ड्यूल किल्स मिलती हैं ये देखा जाएगा। That exactly is the question as well. Like if Sasa dive, oh, he was not able to pull off the dive on the other side. Sasa, they might just be able to get another kill in terms of the fact कि यहाँ पे, लेकिन नहीं. I was thinking about the fact कि शायद अगर वो egg pull off कर पाते तो कहीं ना कहीं, sorry, the egg was on the other side, so he was hoping, the alchemist was hoping to destroy the egg before he goes down, but the answer is going to be yes, वो destroy कर पाते हैं, but he also goes down at the hand of Templar Assassin. Ember Spirit is being chased at the mid side, it's going to be difficult for him to survive, uses the Remnant to scooch away, but Kunkka with the phase boots and the Skyriot Mage just chasing him, is going to be difficult to just find like safe space in this situation. So he has to go back. Hopefully ये जाके दोबारा करेंगे, but Phantom Assassin is just getting as much farm as he can. He's also being spotted. He needs to get back as quickly as possible, obviously. और वही होता है, Kunkka उसको spot करना चाहते हैं. He's able to get away, but Templar Assassin is also being chased, and this is a bigger issue. Templar Assassin with the help of like requires constant help of Kunkka. This lane that much is not super favorable for him. टेम्पलर असैसिन बचने में कोशिश कामयाब हो जाते हैं, एंड मीनवाइल फैंटम असैसिन भी बचने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों की रोटेशन कामयाब नहीं हुई। लीजन कमांडर अभी तक ड्यूल सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाए हैं, वो अभी कंटेंट हैं फार्म करने के लिए। ब्लिंक डैगर की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट मीनवाइल अगेन एक फेल्ड रोटेशन नज़र आ रही है। बट इनफैक्ट नहीं, फिनिक्स के पास कोई एग नहीं है, कूल डाउन पे है वो, लेकिन टीपी नज़र आ रहे हैं। लीजन कमांडर आ जाते हैं और कुंका का एक्स मार्क लग गया है, और ये शायद एक ड्यूल पर एक बेहतरीन डॉज एम्बर स्पिरिट का नज़र आ जाता है ग्रिमस्ट्रोक की मदद से। That was a great मैं कहता हूँ initiation from the side of Team Random, plus the way they try to go on Phoenix. एक कुंका की यहाँ पे टीपी करा ली, साथ साथ इन्होंने made sure they go on the Templar Assassin, and that's not it. They might just go on the Skyrite Mage, making sure कि Legion Commander की rotation, कुंका की rotation didn't work out anyway, and they got an advantage. And this is something this shouldn't this shouldn't be happening. You have a mid lane that is absolutely dominating, and the way Alchemist is climbing up, it will be a major issue.
5900 उसकी नेटवर्थ आ चुकी है. There's no stopping him once he is able to get one item. Other concern about the fact is कि the Templar Assassin वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता आई जा रही है. Okay, he's able to find one player and this is important as well. कि Phantom Assassin को यहाँ पे eliminate करना बार crucial होता हुआ नजर आ रहा है. You have the early game advantage. If you're not able to pull something off like that, it will be difficult. But now I see where the Templar Assassin will be happy. बहुत ज़्यादा stacks कर लिए उनके लिए, so he will be definitely climbing up. और ज़्यादा जैसे कि आपने मेंशन किया, आर्जी ख़तरनाक चीज़ ये भी है कि फैंटम असैसिन को एक इंस्टेंट 4200 नेटवर्थ का एक बूस्ट मिलेगा जब अल्केमिस्ट उनको सेप्टर का अपग्रेड देंगे. तो फैंटम असैसिन एक आइटम कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं जो कि बहुत ही क्रूशल आइटम होता है उनके लिए. बट मीनवाइल टेम्पलर असैसिन अपने डेसोलेटर के बहुत ही करीब आ जाएंगे डिस्पाइट उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रोटेशंस होने पे, क्योंकि वो अपने स्टैक्स का फुल फ़ायदा उठाएंगे. कुंका भी सेप्टर के आधे गोल पर पहुंच चुके हैं तकरीबन. और मीनवाइल अल्केमिस्ट जो हैं वो ब्लिंक टाइगर और रेडियंस की तरफ जा रहे हैं. आई एम नॉट श्योर कि रेडियंस कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस सिचुएशन में, तो वो देखना पड़ेगा. लेकिन ब्लिंक टाइगर तो एक क्रूशल आइटम तो ज़रूर है. एम्बर स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं. सिर्फ 4000 नेटवर्थ तो फीनिक्स के तकरीबन बराबर खड़े हुए हैं, तो उनको कम बैक करना पड़ेगा इस गेम में, क्योंकि कुंका का जब सेप्टर बनेगा, लीजन कमांडर का ब्लिंक डैगर ऑनलाइन आ जाएगा. इस सब के अगेंस्ट बग़ैर आइटम्स के खेलना बहुत ही मुश्किल है. 5k नेटवर्थ एडवांटेज टीम वूफर्स की तरफ से नज़र आ रही है हमें. फैंटम असैसिन को ऑनलाइन आने में बहुत देर है. टेम्पलर असैसिन का डेसोलेटर ऑलमोस्ट बन जाएगा, तो थोड़ी सी ग्रिम सूरत हाल नज़र आ रही है अगले 5 से 7 मिनट में. अगर टीम रैंडम कुछ नहीं कर पाए तो टीम वूफर्स एक सिनेरियो में होंगे जो कि जिससे दूसरी टीम जो है वो शायद ना खेल पाए. Definitely, they will not be able to play that as well. Kuka इस पूरे मैप को अपनी टेरिटरी समझिए, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल. एंड लुक एट दैट, एज सून एज ही वाज गोइंग फॉर दैट रून, वो स्मोक के साथ इंतजार कर रहे थे. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट किल. नाउ all of the team has to move back. Ember का ना होने से, Ember की ना impact होने से, this is getting bigger and bigger issue for every team. And look at that, they're just charging up, going into side T2, and the net worth is up to 6k advantage within the first 14 minutes of the game. And now, other than the fact that ये मसला भी नहीं, look at the map right now. All of the team of Woofers, they are on the other side of the river, and not just that, उसके साथ इन्होंने हर player को, हर बंदे को, they have put him in a difficult situation. And doubt exactly, I think यहाँ पे Alchemist यही कोशिश करेंगे that he is hopeful to get some kind of farm from these stacks that he have done. But other than the fact, Phantom Assassin not looking really good with 5700 वो net worth. Ember का भी net worth 4000 उसके ऊपर रहता है. But look at Templar Assassin, look at Legion Commander, and look at Kunkka right now, 8500, 7800. And more concerning for me, वो भी ढूंढ लिया जाता है उनको बिल्कुल tier 3 और 2 के दरमियान में. So the better choice for your Phantom Assassin in generally is to rotate towards the top. But if he rotates towards the top, Tultrus, I think that's a bigger issue because Alchemist cannot do what he's doing right now. डेफिनेटली. और अल्केमिस्ट हाईएस्ट नेटवर्थ पे तो हैं, लेकिन अल्केमिस्ट का हाईएस्ट नेटवर्थ पे होना इतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता, बिकॉज अल्केमिस्ट का जो ग्रीड की वजह से जो गोल्ड आता है वो तो हर अल्केमिस्ट हमेशा चार्ट के टॉप पर होगा. रेडियंस की तरफ वो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अप्रोच तो यही है कि परहैप्स अल्केमिस्ट गेम को होल्ड कर पाएंगे. बीच में रेडियंस के ज़रिए, ब्लिंक डैगर के ज़रिए वो चूज़ भी कर सकते थे कि एक सेप्टर देना, परहैप्स नीचेस प्रॉफिट को एक अर्ली सेप्टर देना अच्छा रहता. बट अगेन ग्रिम स्ट्रोक पर इनिशिएशन होता है, ग्रिम स्ट्रोक फॉल कर जाते हैं. ड्यूल डैमेज पाइल अप होते जा रहा है. लेवल 12 भी नहीं हुआ है. लीजन कमांडर 56 ड्यूल डैमेज मौजूद है. बस फैंटम असैसिन का ब्लर ही उनको बचा रहा है. 6k नेटवर्थ लीड अभी भी. कुंका एम्बर स्पिरिट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाएंगे. और कुंका का इनफैक्ट सिर्फ एक पॉइंट बूस्टर रहता है, और एम्बर स्पिरिट ने एक माइडस क्यू अप किया हुआ है. That's
is not a great idea. I think in generally where you are in coming from a position like this, you need to do much better. But look at that. I think यहाँ पे साथ साथ अगर देखा जाए तो एम्बर स्पिट को यहाँ पे रैक्स कर दिया गया. He's hopeful like यहाँ पे साथ साथ उनके ऊपर they wanted to make sure that he go anywhere. वो यहाँ से निकल जाते हैं. Nature's Prophet is also in a deep trouble as well. He needs to get out. Will he have enough time to get out? And obviously the way he positioned himself कि वो उनको right side से होके आना पड़ा gives him enough second to get out and an extra second to get out. But look at that, Legion Commander यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं. Okay, Alchemist finally trying to go into the fight, but no, he decides to get back as उनका वहाँ पे ऊपर ward लगा था. इनको realize हो चुका था, but okay, that will give enough time for them to re-engage. और उनको realize हो जाता है जैसे ward तोड़ने की कोशिश करते हैं. वो stun जा चुका है Alchemist का. His stun is faded away. Grimstock ने भी अपनी वो spells use कर लिए. Why not just dive in? And in that maneuver, Grimstock की like जिंदगी चली जाती है. They also take the top tier. और टेम्पलर असैसिन का डेसोलेटर भी बन जाता है. लीजन कमांडर 74 ड्यूल डैमेज के करीब और टीम रैंडम के पास कोई भी अभी फिल वक्त या फिर अगले 5 से 10 मिनट में कोई भी जरिया नहीं है एक कमबैक माउंट करने का. सारी की सारी गेम डिपेंड करती है कि ये फैंटम असैसिन फार्म कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी. डेफिनेटली रैटिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है. टीम रैंडम के पास नेचर्स प्रॉफिट भी मौजूद है, उनके पास एम्बर स्पिरिट भी मौजूद है, फैंटम असैसिन भी मौजूद है जो ब्लर करके स्प्लिट पुश कर सकते हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम वुफर्स उनको वो गुंजाइश छोड़ेंगे बिकॉज एज सुन एज ये एजेस आ जाएगी उनके पास तो टीम वुफर्स जो हैं तो वो तो टावर्स टियर 2 टावर्स जो बचे हुए हैं टीम रैंडम के उनकी तरफ मूव करेंगे. तो क्या फैंटम असैसिन उस वक्त तक फार्म कर पाएंगे तो ये तो देखना ही पड़ेगा. Exactly, I think they देखना पड़ेगा, but the major question was like, it is going to come down to that high ground defense. Have they enough to pull it off? That is going to be the major question. Alchemist is more like your carry now. आपकी बाकी टीम भी pull up कर रही हैं. Phantom Assassin is looking decent enough if he's able to get the second item before the high ground push comes in. I feel like one mistake can be capitalized on that. The damage is not less from the side of Team Random. It's just the durability of the players that is moving in. Ember Spirit goes down really quickly, as well as does the Phantom Assassin. The only player that stands for some amount of time is Alchemist within his ultimate. But all the Team Random needs is one thing going their way, single thing going their way. A team fight, a half of a team fight, Phantom Assassin getting 1 or 2 kills, maybe Ember Spirit finding enough space to move around, and that is it where it turns around. Maybe Kunkka and Templar both goes down, and this is what Team Woofers need to avoid at all costs. You have an advantage. You need to make sure that you don't give it away. This is the time where they're looking to retaliate. They have enough damage, but look at that. Oh, Nature's Prophet found Nature's Prophet. 100 डैमेज. इस तरह अर्जी अगर गेम चलती रहे तो लीजन कमांडर को सिर्फ एक एमकेबी की ज़रूरत होगी और वो फैंटम असैसिन को भी मारने में कामयाब हो जाएंगे. मीनवाइल जैसे कि हम बात कर रहे थे वो रैट स्टाइल प्ले नज़र आ रहा है. बॉटम लेन पे भी टीम रैंडम मौजूद हैं लेकिन आई डू नॉट थिंक वो टावर को मार पाएंगे. एंड मीनवाइल टॉर्मेंटर भी टीम वुफर्स दूसरी टीम को ऑक्यूपाई कर लेंगे. एंड इनफैक्ट डेसोलेटर के ज़रिए टॉर्मेंटर को निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा. You're right. They call that tier 2. Templar Assassin के लिए. As for Ember Spirit, the things doesn't look good at all. He doesn't have a single item that I can say is really great for him. Has drums, an orb of corrosion, maybe things like that. But as for like a definite item, look at Kunkka and look at Legion Commander. बहुत करीब आ चुके अपने BKB के and साथ साथ यही कोशिश कर रहे हैं कि the moment they try to push ahead well वो BKB complete हो. And they're also targeting all the tier 2s. This is the mid time in question. At the same time यही time लेके team random is making sure कि वो कहीं ना कहीं network के ऊपर करीब आ सके. PA will be closing in on his second item as well, and that is good thing for him कि अगर ये second item के साथ कुछ कर पाए. And the stun as well, look at that. Oh, they've smoked as well. Oh, I don't know what exactly they're hoping to do, but this is what I'm talking about as well. They're trying to relieve pressure by smoking up and trying to take out the creeps, and at the same time यहाँ पे bottom की तरफ जो ये सारे के साथ jungle के अंदर आए हैं. Oh, that was the question I was talking about. लेकिन look at that, he was not being able to pull. Oh, he was able to pull off his ultimate, and I thought he might just go down before that. But Alchemist को एक अच्छा मौका मिलता है taking out Skyrat's mage before starting the fight, and he just takes that and gets away. So that's a good amount, a cool kill coming on the side of Team Random.
डेफिनेटली। और नेटवर्थ लीड काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली मैं बोलूँगा नेटवर्थ डिफरेंस अगर आप देखें तो एम्बर स्पिरिट जो है उसको अभी 800 गोल्ड तकरीबन मिला है एक सपोर्ट स्काईरात मेड से, जो कि मेरे ख्याल में पोजीशन 4 सपोर्ट है। बट अगर हम देखें तो उस स्किल से पहले वो फिनिक्स से भी कम नेटवर्थ पे स्टैंड कर रहे थे एम्बर स्पिरिट। डेफिनेटली एक मच नीडेड किल उनको मिली है। ड्रम्स ऑफ एंड्योरेंस बने हुए हैं, लिंकन स्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही बात है आरजी 5 से 7 मिनट से पहले अगर वो नहीं मरे तो एटलीस्ट 5 से 7 मिनट हैं उनको गेम में वापस आने के लिए। मीनवाइल एक्चुअली टेम्पलर असैसिन के ऊपर सक्सेसफुल किल होगी और फॉरेन टीपीज आ रहे हैं, क्या वो दोबारा उनको मार पाएंगे? दूसरी टीम का इतना ज़्यादा सपोर्ट मौजूद नहीं है। एग को निकालने की कोशिश करेंगे, एग को निकालने में वो कामयाब हो जाएंगे और जब टेम्पलर असैसिन की तरफ जा रहे हैं मीनवाइल सपोर्ट आ रही है कुंका की, बट टेम्पलर असैसिन क्या उससे पहले फॉल कर जाएंगी? टॉरेंट भी अब नहीं लैंड करता और टेम्पलर असैसिन विल आल्सो फॉल। मीनवाइल ड्यूल अब आ जाते हैं, एम्बर स्पिरिट को मारने में मोस्ट लाइकली कामयाब हो जाएंगे। ग्रिमस्ट्रोक की तरफ भी इनिशिएशन होती है, कुंका उनको भी मार देंगे, लेकिन आरजी ये जो उन्होंने प्ले में किया है टेम्पलर असैसिन के ऊपर, फिनिक्स के ऊपर 2 किल्स उन्होंने उठा ली थी। एम्बर स्पिरिट के पास तो वैसे भी कोई फार्म नहीं था तो उनको मारना इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट अल्केमिस्ट अब BKB भी उनका बन गया है। सो डेफिनेटली एक टर्न अराउंड की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक अच्छी स्टार्ट टीम रैंडम को मिली है। Definitely, I think वो उनको ये this was something that they were looking for, and the team random they're playing perfectly great in the way कि इन्होंने मैं कहता हूँ the way they're playing it is super great. छोटी एडवांटेज को वो हाथ से नहीं जाने दे रहे। They see a point and you look at Nature's Prophet right now. He's hoping for something at standing here, whether it's a career, whether it is the push that is going to be coming in, and he's just standing here. Ember Spirit मिडास बना के just trying to go in and get much more farm as he know कि उसको farm नहीं मिला, लेकिन Legion Commander will just take him out during the duel, will not give him enough time to get out. उसे पता लिंकन शायद नहीं बना, तो why not I just take the farm and make sure कि आपके mid laner I'll try to play from the like other mindset ke I cannot do much, so I will just try to be support. But other than the fact, I think Team Random is on a good way and they are charging up as well. We haven't seen Phantom Assassin coming into the play जो ये 12,000 बना चुके हैं slowly and steadily, वो Templar Assassin से catch up कर गए हैं. And Team Woofers, I think they will be looking to the, like next Roshan. डेफिनेटली नेक्स्ट रोशान बहुत ही क्रूशल होगा टीम वूफर्स के लिए। अब जैसे कि आपने मेंशन किया आरजी, चलें एम्बर स्पिरिट इस गेम में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फैंटम असैसिन अभी 12,000 नेटवर्थ पे हैं, उनका मोस्ट लाइकली बैटल फ्यूरी और एक और आइटम बन चुका है। अल्केमिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं फार्म में। फैंटम असैसिन के ऊपर इंक्सवेल होगा या फिर अल्केमिस्ट के ऊपर इंक्सवेल होगा, नेचर्स प्रॉफिट की अल्टीमेट भी ओपन होगी। तो अगर फैंटम असैसिन सक्सेसफुल होते हैं स्काईरात में या फिनिक्स को बैकलाइन से उड़ाने में या फिर टेम्पलर असैसिन पे जंप करके उनको उड़ाने में, तो फिर फाइट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है टीम वूफर्स के लिए। सवाल ये होगा कि क्या ये लीजन कमांडर जो कि जिनने 150 ड्यूल डैमेज हासिल कर लिया है MKB की तरफ भी जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल सिनेरियो नज़र आ रहा है एज़ फार एज लीजन कमांडर इज़ कंसर्न। बट अगर लीजन कमांडर को किसी तरह कंट्रोल कर दिया जाए तो फिर टीम वूफर्स डेंजरस पोजीशन में आ सकते हैं। Tier 2 टावर्स उन्हें सारे निकाल दिए हैं, लेकिन फैंटम असैसिन को शट डाउन करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बिकॉज फैंटम असैसिन इवन अगर आप बेस के अंदर कन्फाइंड हैं तो फार्म फैंटम असैसिन फिर भी निकाल सकती हैं, बिकॉज ब्लर के इस्तेमाल से फैंटम असैसिन तो कहीं भी हो सकती है, वो ना नज़र आएंगी, सिर्फ स्कैन के ज़रिए नज़र आएंगी वो, और तो वो अपना फार्म कंटिन्यू करेंगे। नेचर्स प्रॉफिट टेलीपोर्ट करके अपना फार्म हासिल कर सकते हैं जैसे कि वो कर रहे हैं अभी। तो टीम वूफर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज पे हैं, 8K नेटवर्थ लीड है उनके पास, लेकिन कमबैक पोटेंशियल टीम रैंडम के पास पूरा का पूरा मौजूद है अभी। And if something can be done for Ember Spirit, I think that is the key to their answers right now. Alchemist farming, PA farming as well, they are waiting for that. They cannot just go in and push. Other than the fact, Alchemist की BKB आ चुकी है, just charging up on assault cuirasses. That's also a good item for him. तो उसके लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये कि okay, you have to वापस, पर इनफैक्ट सक्सेसफुल नहीं होंगे।
ओ एक स्मोक और फिर बीकेबी भी यूज़ करवा लिया लीजन कमांडर का। And that's what Ember Spirit is for. Now I understand perfectly. डेफिनेटली आई थिंक परहैप्स कुंका को आगे जाके एक एक्स मार्क एटलीस्ट लगा दें तो वो ज़्यादा आसानी से किल सिक्योर कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट एम्बर स्पिरिट माइडस की तरफ चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट लिंकन स्फीयर। और फिर अब स्काईरेट मेज की तरफ जाते हैं और स्काईरेट मेज ये बहुत ही एक सिंपल किल होगी उनकी तरफ। But not just that, they found, I think, okay, they found as well Nature Prophet को charge करते हैं. Nature Prophet might just go down at the hand of Legion Commander, but is just it? Are they charging up as well? Can they take him, Legion Commander out? And the answer is going to be big fat yes. That's the kill they were looking for. That's the kill they were hoping for as well. 1,500 gold इनको मिल जाएगा. God-like streak going outside for the way of Phantom Assassin. And the third item in 26 minutes. This has just turned everything around. यही मसला था, नेचर प्रॉफिट को देना ही बहुत बड़ा मसला हो गया। डेफिनेटली आरसी वो उस 1500 गोल्ड से फैंटम असैसिन का पूरा डेसोलेटर कंप्लीट हो गया। एंड मीनवाइल अगर आपने नोटिस किया हो अल्केमिस्ट भी उस टाइम में फार्म करे जा रहे हैं, स्काईरात मेज मर गए हैं। तो ये प्ले डेफिनेटली टीम वूफर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि वो ग्रुप अप रहें। बट ऑल्सो ग्रिमस्ट्रोक शायद यहाँ पर मर जाएंगे। कुंका जा तो रहे हैं, ओ डोरेंट उन्होंने सही लगाया लेकिन लैंड हो गया। टेम्पलर असैसिन का ट्रैप भी मिस हो जाता है और ग्रिमस्ट्रोक यहाँ से निकल जाएंगे। बट डेफिनेटली टर्न अराउंड पोटेंशियल आ गया है, लेकिन फैंटम असैसिन को केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 हीरो मौजूद हैं। लेकिन बीकेबी उनके पास मौजूद है, टेम्पलर असैसिन के पास अभी अपना एमकेबी नहीं बना हुआ, तो वो फैंटम असैसिन को इस तरह नहीं मार सकते। रिफ्रेशिंग के ज़रिए एक्चुअली वो मार देंगे उसको। I think the best part was Dagger. The Dagger part, nobody counted that. Like, look at Ember's Fate. He was just going in a bit blindly, got a bit twice. यहाँ पे silence होते हैं, but उसके बाद he will not be able to get out. But this is finally Alchemist charging in. He was hoping to get a kill on Templar Assassin, but इनकी BKB recently आए. They might not have accounted for that fact as well. And now he has to go out. Unfortunately, मसला सिर्फ ये रहता है. Legion Commander might be just coming in. He wants to get out, और इनको BKB इस्तेमाल करनी पड़ेगी just to go back into the base safely. This was a bit of issue that was being created on the side of Team Random. They did everything perfectly fine, they did everything great, but मसला यही आ रहा था कि ये एक छोटी सी गलती has taken away all the effort that you did for the last 7 or 8 minutes, and including that kill on Legion Commander. और काफ़ी हैपहैज़र्ड प्ले में नज़र आ रहा था। एम्बर स्पिरिट का वापस जाना उस फाइट में बनता नहीं था, बिकॉज उसके पास कोई फार्म अभी मौजूद नहीं है। लीजन कमांडर अभी 214 गोल्ड पर मौजूद है, उनका एमकेबी भी कंप्लीट हो चुका है। फैंटम असैसिन के पास अभी इतना सर्वाइविंग पोटेंशियल तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन मीनवाइल टॉप लेन की तरफ हो सकता है कि इनिशिएशन हो। इनफैक्ट वो कुंका की तरफ जाते हैं, कुंका अपना बीकेबी ओपन कर देते हैं। लीजन कमांडर वहाँ पर मौजूद नहीं है, फीनिक्स के पास एग भी मौजूद नहीं है। अभी बीकेबी ओपन होता है और ये कुंका शायद यहाँ पर गिर जाएँ, फॉल कर जाएंगे, फीनिक्स भी मर जाएंगे और स्काईरात मेज इज इन बिग ट्रबल राइट नाउ, वो भी फॉल करेंगे। तो 3 किल टीम रैंडम की तरफ जाती हैं। एक बायबैक का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट टर्न अराउंड होता है। लीजन कमांडर का ना होना वहाँ पर बहुत ही डिज़ास्ट्रस मैं कहूँगा साबित होता है टीम वूफर्स के लिए। अच्छी बात यह है कि दोनों को मौजूद हैं, लेकिन एजेस को कैसे कंटेस्ट करेंगे बग़ैर अपने फीनिक्स के, बग़ैर अपने कुंका के? That's going to be a major question, and खास तौर पे the way damage from Alchemist and Phantom Assassin that रोशान बहुत जल्दी यहाँ से एलिमिनेट होगा। और मसला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि एलिमिनेट होगा। टीम वूफर्स नीड टू रियलाइज कि एनी चांस टीम रैंडम find it a 4v5 or a 5v4, they will leap at it. You cannot hope for a fact कि यार आपका एक player can just take a random trip to the other side. These are the mistakes we were talking about. The fact that you were able to create so much pressure on the map, and now we see Team Random just going up and taking the ages. This is a bigger issue. Phantom Assassin will become much more of a concern. You cannot duel him. If you duel him as well, that's just being Legion Commander not being much more useful in that fight. At the same time, Phantom Assassin with an Aegis might become more difficult for like Skywrath Mage will create an issue for Templar Assassin as well. So these are the things that I wanted them to avoid. And look at that. Okay, they knew where he was coming from. Oh!
रीजन कमांडर का ब्लिंक आउट, वो टीपी आउट, रोशान स्टॉप हो जाता है और इसके हेल्प के साथ एक बहुत ही क्विक एजिस टीम रैंडम को मिल जाएगी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टन रोशान की तरफ से, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट टीम रैंडम नीडेड, क्योंकि अब एजेस भी है, पीए के पास चीज़ है, अल्केमिस्ट के पास, तो इसके ज़रिए अब टीम रैंडम के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि हम 11,000 की लीड आरजी हम देख रहे थे, अब वो आधी हो गई है, सिर्फ 5,000 की लीड मौजूद है। एम्बर स्पिरिट का लिंकन स्पिरिट बनने वाला है, अल्केमिस्ट का असॉल्ट क्वेरस तैयार हो चुका है, फैंटम असैसिन के पास एजेस, और अब टाइम आ चुका है टीम रैंडम के पास, जो मैं 5 से 7 मिनट का जिक्र कर रहा था, वो टाइम इलैप्स हो चुका है और अब उनका वक्त है थोड़ा सा अग्रेशन डिस्प्ले करने का। Exactly, this was the game जो कि हमें टीम वूफर की तरफ जाते हुए नजर आती है, but slowly and steadily they have given it away. Ember Spirit, even if they have not found Phantom Assassin and Alchemist are looking super good right now, and अगर Ember Spirit को यहाँ पे वो भी दे सकता है। Oh, look at that, they might just have found Templar Assassin, और Phantom Assassin is just okay. No, he just needs to be a bit more careful. I know they're just gonna be diving in, they're just gonna be charging in as well. Templar Assassin will use that BKB to go out. वहीं पे मौजूद है हमारे पास बाकी 2 players as well. Even if PA goes down, is it enough? बाकी players भी वहीं आ जाएंगे, but PA doesn't exactly necessarily goes down. The X come in, and with that the torrent ship यहाँ पे आ जाएगी, इस्तेमाल कर ली जाएगी, and Aegis goes down. Ember Spirit, sorry, Alchemist यहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश करेंगे. Phantom Assassin is also being in deep trouble. यहाँ से बिल्कुल blur out करने की कोशिश करते हैं. One more shot, he might just go down, and obviously a single dagger आता है जो कि Phoenix को eliminate कर देगा, but unfortunately Alchemist पीछे से उन्हें Ember Spirit को ढूंढ लेंगे. Legion Commander he goes down as well, and देखते ही देखते 4 players यहाँ पे टीम रैंडम के eliminate हो जाएंगे. A very hastily call by Phantom Assassin and at the same time आपके Alchemist की तरफ से डेफिनेटली वो जो सारा एडवांटेज ने इतनी मुश्किलों से तैयार किया था वो खो गए हैं, और वो फाइट लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसकी वजह से एक रैक्स एट द वेरी लीस्ट तो जाएगा, एंड परहैप्स 2 रैक्स चले जाएंगे, बिकॉज बाईबैक्स तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। तो ये टीम वूफर्स जो हैं वो टॉप लेन की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। अल्केमिस्ट के पास चीज़ तो ज़रूर मौजूद है, शायद वो लड़ने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट वो लीजन कमांडर को मार देंगे, और इसकी वजह से इससे पुश बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। वो टेम्पलर असैसिन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और रीजन्स के जरिए रीजन्स की वजह से टेम्पलर असैसिन ब्लिंक भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी ओवर कमिटमेंट नज़र आई थी, एंड इनफैक्ट वो ही इज़ नॉट डन येट, क्योंकि वो कुंका की तरफ भी जाएंगे। कुंका के पास कोई जरिया नहीं है अल्केमिस्ट को मारने का, उनका वेव और अल्केमिस्ट को पुश बैक करेगी, लेकिन टॉरल भी मिस ज़्यादा नीचे प्रॉफिट का टीपी इन भी आता है, साइलेंस के जरिए कुंका को भी मार देते हैं। तो टीम रैंडम एक और कमबैक नजर हमें आ रहा है। अल्केमिस्ट को टिप्स मिल रही हैं, और बिल्कुल सही टिप्स मिल रही हैं, बिकॉज उन्होंने दूसरा रैक्स तबाह होने से बचा दिया अपनी टीम को। लेकिन आरजी जो टीम रैंडम ने गलती की थी वहाँ पर फाइट लेने की, इन पर्टिकुलर फैंटम असैसिन जो आउट ऑफ पोजीशन पकड़ी गई थी, वो ब्लिंक वो बीकेबी करके टीपी आउट करने की कोशिश कर सकते थे, बट परहैप्स वो देख रहे होंगे कि शायद कुंका भी, शायद लीजन कमांडर भी मौजूद है, तो शायद इसीलिए वो उन्हें फाइट फोर्स करने की कोशिश की, बट मौका अभी भी टीम रैंडम के पास मौजूद। Exactly, they are able to take the tier 2 as well, creating much more space for themselves and farm. Lekin the major concern is for the Ember Spirit. He's entirely not helpful in this regard. Nature Prophet यही कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि कहीं ना कहीं Phoenix है, but Phoenix will TP out in that situation. Ember Spirit finally trying to get some kind of farm across the map. Lincoln बन चुका है, that will give him much more space to roam freely against the X marks and Legion Commanders duel. तो यही चीज़ की इजाज़त थी, and since I think they will utilize this time for the next minute they have कि अभी हम Ember Spirit को farm देते हैं, but Alchemist is just gonna be charging in, takes a dive, but he has to get back. उसकी वजह यही रहती है कि because all of the team from the team Woofer is just right there standing, and he was hoping to get out. BKB करके he's gonna dive in, take the duel as well, but नहीं, Alchemist, what are you doing? You need to get out. There's a lot of damage, but साथ साथ Ember Spirit भी charge करते हैं. Egg is gonna come off as well. Nobody's gonna be hitting साथ साथ Egg, but somewhat they're able to allow it to run away from this situation.
डेफिनेटली, लेकिन टीम वुफर्स दे नॉट डन येट, क्योंकि एक एक्स मार्क भी आएगा नेचर्स प्रॉफिट की तरफ, बट मीनवाइल बैक लाइंस पे फिनिक्स को निकाल दिया जाता है और वापस अब टेम्पलर असैसिन की तरफ डाइव इन करते हैं। अल्केमिस्ट भी अंदर जाते हैं, बीकेबीज दोनों टीम के पास मौजूद नहीं है। लीजन कमांडर बहुत लो है, फैंटम असैसिन कहाँ पे है? लीजन कमांडर के ऊपर ब्लिंक इन करते हैं, उसको भी मार देंगे और अब दोनों कोर्स मौजूद नहीं है। कुंका बहुत ही लो नज़र आ रहे हैं, अल्केमिस्ट ब्लिंक इन करते हैं और कुंका भी उनके पास कहीं भागने का मौका नहीं बचता और अब सिर्फ टेम्पलर असैसिन बची भी हैं और एक्चुअली ब्लिंक आउट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अल्केमिस्ट सेकंड वार्ड के नीचे हैं, वो अल्केमिस्ट ब्लिंक इन करेंगे अपने स्टन के साथ और ये टेम्पलर असैसिन के पास भागने का कहीं भी रास्ता नहीं है, बस ये रिफ्रेशन खत्म होने का इंतजार है और ये वापस एक और किल उठा लेंगे। एम्बर स्पिरिट को किल जाएगी, तो एक बेहतरीन फाइट आरजी हमें नज़र आ रही है और पहली दफ़ा गेम में आरजी अगर आप नेटवर्थ एडवांटेज को अगर ज़रा गौर से देखें तो अब टीम रैंडम के पास नेटवर्थ एडवांटेज आ गया है। And now they're just going up the high ground as well. There's only one player left behind. That's going to be Phoenix. Can he survive the fact? And obviously, वो साथ charge up करते हैं. Issue यही बनता है कि दो buybacks आते हैं नजर. Can he get away? The answer is going to be a bit difficult. Obviously, he's just going to be charging in. वहीं पे फिर duel लगा दिया जाता है. Alchemist is hoping to run away in that way. Can he pull it off? And obviously, he'll pull it off. Alchemist goes down. Sorry, Phantom Assassin goes down. Alchemist TPs away. The reacts are saved, but at what cost exactly? दो players का buyback हुआ था. And is it enough? Because अगर Phantom Assassin के पास buyback है, that fight that you're hoping for अब mid के ऊपर, that might just take you away. 60 seconds isn't exactly a lot of time for you to do any kind of damage across the map. I don't think टीम वुफर्स पुश कर भी सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखो तो टेम्पलर असैसिन के तो अलाइव नहीं है और हम अभी देखेंगे कि वो फिनिक्स को भी किल मार देंगे तो उनका पूरा का पूरा पुश पोटेंशियल रोक दिया जाता है इन द ट्रैक्स। फैंटम असैसिन आराम से बाय बैक करेंगे और अब टीम वुफर्स थोड़ी सी डेंजरस पोजीशन में हैं बिकॉज वो इतना अग्रेसिव खेल नहीं सकते। कुंका के पास बायबैक नहीं है, लीजन कमांडर के पास बायबैक नहीं है, तो अगर लीजन कमांडर कुंका में से कोई भी मरता है तो फिर दैट मीन्स टीम रैंडम के पास अपॉर्चुनिटी होगा, मौका होगा हाई ग्राउंड जाने का। इसी चीज़ को वो देखते हुए, इसी ग्लोबल इनिशिएशन को देखते हुए नेचर्स प्रॉफिट जो प्रोवाइड करते हैं वो उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। Exactly, but this was a great in general kill, not for Team Random, for Ember Spirit himself. He was struggling throughout the game, position 4 के नीचे कहीं मौजूद थे, but somewhat he's catch up to even Kunkka. So that's a great thing, but look at that. Templar Assassin gains a bit of advantage. वहाँ पे साथ साथ बॉट को भी eliminate कर देते हैं और टीनेजर्स प्रॉफिट को भी गेम से eliminate साथ ही साथ he will take him down as well. Ember Spirit just trying to run away and he has enough amount of damage, hoping कि इस time तो रोशान आ सकता है, and the answer is going to be no. While team Woofer is trying to get up on the top side, साथ साथ mid और bottom lane भी push होते हुए नजर आ रही हैं, and they have to TP out. Obviously they need to defend bottom tier 2. Oh, the X mark, I forgot about that idea. You can just go defend the base and come back. But yes, यही करते हैं, वहाँ पे वापस जाते हैं। Templar Assassin यही realize करती है कि I need to be back with the team because these are the exact amount of moments that Team Random capitalize on. The moment that somebody TPs away, वही push करती है. But for now, Team Woofer is just standing outside waiting for ages. डेफिनेटली एंड आरजी ये याद रखें कि अल्केमिस्ट अभी 6 स्लॉट होने वाले हैं, तो 6 स्लॉट होने के बाद अल्केमिस्ट के पास सेप्टर्स देने का टाइम आएगा। परहैप्स एक मूनशॉट भी ख़रीद लेंगे वो, लेकिन सेप्टर्स जब देना शुरू करेंगे वो, तो वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होगा टीम रैंडम के पास, बिकॉज उनके हीरोज़ का सेप्टर यूटिलाइज काफ़ी हीरोज़ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हम एक स्मोक का मुजाहिरा देखेंगे। चारों हीरो स्मोक अप हुए हैं, पांचों हीरो इनफैक्ट स्मोक अप होंगे। एम्बर स्पिरिट एक्चुअली विजन के अंडर स्मोक अप होते हैं, वो किसके पास आएंगे? Definitely, look at that. They are charging up. साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे stun भी कर दिया. He's just gonna go inside. They find nobody. He doesn't find anybody. But that doesn't stop the fight from happening. They are charging up in Ember Spirit. यहाँ पे थोड़ा सा torrent के नीचे आ जाएंगे. साथ ही साथ he's gonna be going with a higher part of Hex and Templar Assassin will take him down. Won't give him enough time to even Remnant out. Duel आ जाता है. Takes down the Grimstroke as well. And now this thing is up के यहाँ पे साथ साथ fight होती है PA की. PA takes on यहाँ पे Team Legion को साथ Templar Assassin को भी ले जाती है. And before he goes on, he
might just have taken down Kunka as well. The answer is going to be big yes, क्योंकि 2 players buyback के साथ eliminate हो जाते हैं. Alchemist इस सारे mode में एक free for all के लिए चल रहा था. He was getting kills one by one. Nobody was able to stop him. 6 slot hit Alchemist. Just made sure के एक damage हो जाए. But the major highlight of this fight was Phantom Assassin. डेफिनेटली फैंटम असैसिन ने काफ़ी अच्छा ये जो आरजी मुझे नहीं लगता था कि वो फैंटम असैसिन और अल्केमिस्ट मिलकर रीइनिशिएट करेंगे बिकॉज वो एम्बर स्पिरिट को इतनी और ग्रिमस्ट्रो को इतनी जल्दी फाइट से टीम वूफर से निकाल दिया था. लेकिन अब लीजन कमांडर कुंका नो बायबैक. इनफैक्ट डायर टीम में किसी के पास बायबैक नहीं है. वो सीधा थ्रोन की तरफ जा सकते हैं और टीम रैंडम जो है वो यही करेंगे, सीधा थ्रोन की तरफ जाएंगे. ग्लिफ तो आ जाएगी लेकिन एक 6 सेकंड की ग्लिफ क्या ही कर लेगी टीम वूफर्स के लिए जब उनके पास बायबैक नहीं है. स्कायराथ मेज का एक बायबैक आता है लेकिन अकेले तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, एक हीरो को भी नहीं निकाल पाएंगे. और अल्केमिस्ट की जितनी अटैक स्पीड है तो वो तो सीधा थ्रोन की तरफ जाएंगे. थ्रोन को वो हिट कर रहे हैं, फीनिक्स रिस्पॉन्ड करने वाले हैं लेकिन कुछ भी नहीं है बाकी टीम वूफर्स के पास और जी की कॉल आ जाती है. What a disappointing game for Team Woofers. They had everything in their backpack, they had everything in their mind, but small mistake costed them the game. Team Random, they are way ahead in terms of their game plan. They are way ahead of their strategy and their execution, and they have a plan in mind कि हमने करना क्या है, and they execute it, and all of that from initial creation of the idea to final delivery of it, everything is perfect, nothing goes there. There was only 1 or 2 moments in the whole game where I could go like ye yahan pe this could have been a bit other way. I got to that one moment. While we talk about team Woofers, they had this game in their palm. They had this game completely dominated from either side. आपके position 4 से नीचे उनका मिड लेना था. एम्बर स्पिरिट has almost no impact till 30 minutes of the game. That's a huge amount of time. Your Phantom Assassin was almost out of the game as well. Legion Commander was pressurizing, so was team Kunkka all across the map, giving enough time for Templar to farm. But if you're not able to take it all the way to a victory, that is a big question mark on what exactly did you do wrong. डेफिनेटली. एंड आई थिंक आरजी लेटर गेम की तरफ जो मिस्टेक टीम वूफर बार बार कर रहे थे वो एम्बर स्पिरिट को ड्यूल करना कर रहे थे बिकॉज पूरा का पूरा डैमेज टीम रैंडम का एम्बर स्पिरिट से तो आ ही नहीं रहा था. एम्बर स्पिरिट के पास क्या ही आइटम बने हुए थे. एक लिंकन स्फीयर ही तो बना हुआ था एम्बर स्पिरिट के पास, उसके अलावा ड्रम्स बना हुआ था और कुछ 1-2 और आइटम थे लेकिन कोई भी डैमेज आइटम एम्बर स्पिरिट के पास मौजूद नहीं था. तो उस पर ड्यूल इस्तेमाल करना, पर्टिकुलरली जब आपका लीजन कमांडर इतना ज़्यादा फार्म्ड हो, 200-250 डैमेज ड्यूल डैमेज लेकर वो बैठे हुए हों, तो फिर एमकेबी भी बनाया. वो एमकेबी आपने किस लिए बनाया है? एमकेबी तो आपने फैंटम असैसिन के के अगेंस्ट डील करने के लिए बनाया था लेकिन उस पर ड्यूल नहीं जा रहा. फाइट्स में हमेशा फैंटम असैसिन और अल्केमिस्ट ज़िंदा रहते थे, जो कि हमने देखा कि अल्केमिस्ट वो क्रूशल प्लेयर था इस गेम में जो कि हम बार बार फाइट्स को टर्न अराउंड कर रहा था. रैक्स को भी उन्होंने बचाया था, फाइट्स को भी उन्होंने टर्न अराउंड कराया था. एंड दैट्स टीम रैंडम इन दी एंड, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो इतने मैसिव डिसएडवांटेज के साथ खेल रहे थे. मैप कंट्रोल उनके पास बिल्कुल ही ख़त्म हुआ था. लीजन कमांडर अपोनेंट्स की टीम उन डोमिनेट कर रहे थे. फार्म में वो इतना ज़्यादा बिहाइंड थे. एम्बर स्पिरिट का सिर्फ एक माइडस बना हुआ है और कुंका के पास एक ब्लेड मिल और एक सेप्टर बना हुआ है. इतने बड़े डिसएडवांटेज के अगेंस्ट उन्होंने खेला है तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला है. और नेचर्स प्रॉफिट को भी इनफैक्ट क्रेडिट मिलना चाहिए. नेचर्स प्रॉफिट एक ग्लोबल प्रेजेंस अपनी उसने दिखाई थी एंड जस्ट गोस टू शो कि नेचर्स प्रॉफिट इतना ज़्यादा बैंड हीरो और इतना ज़्यादा पिक्ड हीरो क्यों है अभी इस मेटा में. आप कभी भी किसी भी वक्त रोटेट कर सकते हो. आप ग्लोबल विजन एक तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हो. और इनफैक्ट टीम ने अगर आपको निकाल भी दिया, जैसे कि हमने देखा था लीजन कमांडर ने ड्यूल भी काफ़ी अक्सर नेचर्स प्रॉफिट को मार दिया था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड हो जाती है कि अगर आपको पता हो कि लीजन कमांडर
एक जगह मौजूद है तो आप दूसरी लेन से पुश कर सकते हो। मैप कंट्रोल आपके पास जितना भी है तो आप फार्म एक सेंसिबल तरीके से निकालना होता है, जो कि आप देख रहे होंगे मैप पे फैंटम असैसिन जो थी वो हमेशा एक अच्छी जगह पे फार्म कर रही थी। सिर्फ 1-2 मिस्टेक्स मैंने देखी थी जहाँ पे वो गैंक हो गई थी, बट उसके अलावा तो उसने अपना फार्म पूरा का पूरा निकाला था। अल्केमिस्ट ने अपना फार्म पूरा का पूरा निकाला था। टावर्स भी वो पुश कर पा रहे थे एंड इन दी एंड वो आखिरी टीम फाइट जो हुई थी वो जीते थे। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि परहैप्स एमवीपी की हम अगर बात करें तो एमवीपी परहैप्स उस रोशान को जाता है जिसने रीजन कमांडर का टीपी आउट रोक दिया था, बिकॉज उस टीपी अगर वो टीपी आउट हो जाता तो शायद एजिस उतनी आसानी से नहीं जा पाती, शायद गेम के अंदर वापस टीम रैंडम का आना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता। They were key, like there were moments of brilliance from the team random side and moment of dominance from the side of team Woofers as well. This game had it all. Unlike the last game when it came down to those team fights, both of the team are going to and fro. I think this game showed a much better picture of team random, and at the same time showed the skill that team Woofer possesses. खास तौर पे the way Ember Spirit was pressurized out from a game that he had no impact in the late part of the game was one moment of brilliance from the side of team Woofers. Other than the fact that team Phantom Assassin was also being punished left and right and he was forced to TP top, even at the fact that tier 2 or 3 के दरमियान में जो bottom side पे Reddit के camp रहे थे, he was found on that large camp as well and was taken out to the pack कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ base थी, उधर तक उसको चेस किया गया था by Legion Commander and his teammates. So that was the moment of brilliance and that capitalized on the fact that they were creating more and more pressure. The only thing they were not stopping was okay, Alchemist farm kar raha hai, and they were like okay, we're okay with the fact that Alchemist farm kar raha hai, but that was the moment of brilliance. Obviously, when you talk about Team Random, they had a game plan in mind. They're like, okay, Ember, realize the fact you're not going to get farm, and even if you get farm, we are not going to likely lose. Alchemist just transitioned from a position 3 to a position 1 in terms of farm, in terms of preference. I think that's the moment of the key moment of all. You realize कि Ember Spirit had a better lane. उसने Templar Assassin को eliminate किया, उसने बार-बार tier 1 push किए, and now he has the top jungle to himself. Kunkka खेली mid और bottom की तरफ रहा था. Nobody is charging up. Then you realize कि okay, if we let Alchemist fight right now, he'll probably lose. Why not just try to capitalize on the fact कि Alchemist ही हमें game जितवा दे, कि Alchemist ही position 1 बन जाए. And no, then he started making sure that he gets the safest farm on the map, which in turn let Ember and MPA getting punished. But in the end, they changed their game plan and changed the highlight during the game, or changed the strategy during the game, and that was what I loved the most about Team Random. That it looked like a different picture at the start, it looked like a different game plan in the center, and it looked like completely different in the end. And the key moment was like it worked out. It worked out greatly for them. डेफिनेटली आरजी एंड इट जस्ट गोस टू शो कि हमने इस सीरीज़ से पहले जो डिस्कशन कर रहे थे हम कि इस मेटा में मिड लेन की या फिर मिड हीरोज़ की कितनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आई थिंक इस गेम में वही चीज़ साबित होती है कि हम जो बोल रहे थे कि ऑफ लेन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मिड लेन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो डेफिनेटली इवन दो एम्बर स्पिरिट आई वुड से मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज इन दी एंड वो एक सॉर्ट ऑफ ड्यूल क्रीप ड्यूल टारगेट बन चुके थे कि उन्हीं पर ड्यूल आएगा, वो ड्यूल को टैंक कर लेंगे और फिर री इनिशिएशन होगी टीम रैंडम की तरफ से, तो उस चीज़ में तो वो काफ़ी सक्सेसफुल थे. बट ऑफ लेन की इम्पोर्टेंस हमने देखी. अल्केमिस्ट जो थे उन्होंने ब्लिंक डैगर बनाया, उन्होंने रेडियंस बनाया, फिर उसके बाद से वो टीम फाइट्स में आना शुरू हो गए. मिड लेन इवन दो एम्बर ने इतना कुछ नहीं कर पाए, वो फिर भी उन सारे रोल्स का एक सॉर्ट ऑफ रीएडजस्टमेंट तो नज़र आई थी जो कि इस मेटा में हम अक्सर देखते आ रहे हैं. And coming to the highlights of the match, this was the part where you felt like, okay, the top side is being pressured, even with the rotations coming in. Ember को farm और pressure मिल रहा था, and the fact that Alchemist committed to taking Phoenix out, that was also impressive. And यही मसला एक तो even for TA as well, this was somewhat a cost of TA. TA was being killed multiple times toward the top side. The major part of your jungle was left behind. So was your आपके जो वो triangle रहता है, even if it was being stacked, if it comes at the cost of your death,
that was a big question mark. But look at that. This was the way it turned everything around. The getting the most important kill of the game, जो 1,500 1600 gold दे के जाता है आपको, and making sure that PA comes back into the fact. And now after the 24th or 50th minute of the game, they start charging up, and team Woofers had absolutely no idea how to react. डेफिनेटली एंड अगर आपने नोटिस किया हो आरजी, टीम रैंडम ने जो फाइट्स चूज़ की थी वो इतनी ब्रिलियंट फाइट चूज़ की थी. उन्होंने देखा था कि लीजन कमांडर मौजूद नहीं है और वो एग्जैक्टली उसी वक्त जाते थे. और यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्केमिस्ट ने अपने पूरे के पूरे बेस को किस तरह बचाया है सिर्फ एक ग्रिम स्ट्रोक की मदद से. उनके तीनों प्लेयर्स मौजूद तीनों नहीं cores. है, नो कोर्स अवेलेबल, लेकिन फिर भी उन्होंने बेस को बचा दिया. और आखिर में इनफैक्ट वो अहेड आ चुके थे. इस फाइट के बाद नेटवर्क लीड उनकी तरफ जा चुकी थी और इस फाइट में पर्टिकुलर उन्होंने री इनिशिएट किया और फैंटम असैसिन ऑलमोस्ट मर गई थी लेकिन जिंदा रह गई क्रिट्स के ज़रिए, ब्लिंक स्ट्राइक्स, ब्रिलियंट ब्लिंक स्ट्राइक्स के ज़रिए. टॉरेंट उन पे हिट नहीं किया था और फिर गेम यहाँ पर जाके ख़त्म हो गई थी. Exactly. I think generally the way PA played in that fight is very, very impressive. Going down to the 20% HP, taking on man fighting Legion Commander. Legion Commander having 300 dual damage approximately, और MKB भी होने के बावजूद man fight किया, take Legion Commander out, went on to the TA, took TA out with only 20% HP left, and then jumped on to Kunkka, and Kunkka की भी 70% HP इन्होंने ही निकाली थी PA ने. And Alchemist was right there hitting, but as much as damage came from the fact कि खास तौर पे PA से आया था, that was crazy impressive. And to turn that fight all around, let me paint it a picture. आपका Grimstock got eliminated. आपका दूसरा sport also got eliminated at the start. You have, maybe it was Ember Spirit, not sport, like maybe it was Ember Spirit जो कि eliminate हो चुके थे. You lost 2 members of your team at the start. Yes, it was Ember Spirit and at the same time Grimstock. अब आपके you are left with only 3 players behind. That is PA damage ले रही है from your right click from Legion Commander. Legion Commander is crazy damage dealing, but you turn it all around with the fact okay, you like obviously that crit strikes definitely played a crucial role. That life still coming in, that was an impactful thing, but they committed to it and they made a choice, and obviously I think it was quite impressive. Looking at the scorecard, we have only one winner, and that is going to be Alchemist. डेफिनेटली 32,000 नेट वर्थ. और आरजी सिर्फ एक डेथ अल्केमिस्ट की जो हमने हाइलाइट्स में भी देखी थी, वो बहुत ही अर्ली गेम में उसकी एक डेथ हुई थी. उसके बाद से अल्केमिस्ट एक भी दफ़ा नहीं मरे. वो उन्होंने सारा का सारा फार्म निकाला डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास कोई मैप कंट्रोल नहीं था. सारे टावर्स, आउटर टावर्स जा चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने ये सारा फार्म निकाला. एंड एम्बर स्पिरिट की जो हम बात कर रहे थे कि उनके आइटम्स क्या ही थे जो उनको इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है एज अ ड्यूल टारगेट. उनके पास एक सांज इन काया सांज इन याशा बना हुआ है, सॉरी सांज इन काया बना हुआ है, लिंकन स्फीयर बना हुआ है और एक माइडस बना हुआ है. तो उनका तो कोई भी डैमेज आउटपुट नज़र नहीं आ रहा था. परहैप्स उनकी सीलिंग चेन्स ही फ़ायदेमंद थी, तो उन पर ड्यूल इस्तेमाल करना आई डोंट थिंक आरजी लेट गेम की तरफ इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा डिसीजन था. परहैप्स PA फैंटम असैसिन को ड्यूल करते या फिर अल्केमिस्ट को ड्यूल करते तो उनको ज़्यादा फ़ायदा रहता. एम्बर स्पिरिट को डैमेज करने देते जितना डैमेज कर रहा है, बिकॉज आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप एम्बर स्पिरिट को निकालें और सीलिंग चेन से बच जाएं, या फिर आप फैंटम असैसिन को निकालें और वो जो 2000 की क्रिट्स कर रही थी उससे बचा दें. बिकॉज जैसे कि हमने देखा था फैंटम असैसिन इंस्टेंट बैक लाइन्स पे ब्लिंक करके फिनिक्स को हमेशा फाइट से निकाल देती थी, स्काईरात मेज को हमेशा फाइट से निकाल देती थी. जो थोड़ी बहुत सक्सेसफुल फिनिक्स अल्टीमेट्स हमने गेम 1 में देखे थे, गेम 2 में आई डोंट थिंक हमने एक भी सक्सेसफुल एग निकलते हुए नहीं देखा. And definitely the most crucial, the most जिसमें से key factor रहता है वो alchemistry रहता है. The way he was hitting with the BKB, उसके that was a great thing, and he always उसकी एक और वजह भी रहती थी. The moment they realized they cannot hit the egg was the moment they backed away. We saw that happening in the bottom side, जहाँ पे PA Alchemist was taking a fight and they were going on the TA and उनका at the same time egg लगता है. We saw them take a 180-degree का flip and moving back towards the base and realized, oh, we have lost this. We've lost the racks as well. But let's just not lose our alchemist and the support game stock जो रहता है. So that was the moment in the within 5 जो decisions थी वो भी अच्छी थी, realizing when you have lost, when you have the advantage, and
जो एक और चीज थी छोटी छोटी जो दिस इज व्हाट मेक्स अ ग्रेट टीम लाइक अ गुड टीम अ ग्रेट टीम एंड अ बेस्ट टीम दे डिजर्व्स टू बी इन द प्लेऑफ्स उसकी एक मेजर वजह यही रहती है चल्ट्रस के you realize the moment Legion Commander TP'd away, that was a fight they took. You realize the moment Skyrats ward तोड़ने के लिए करीब आते हैं, Alchemist jumped in, took him out and went back without engaging a full fight. They capitalized on the fact कि okay, इन्होंने लीजन कमांडर ने ड्यूल लगा दिया हमारे नेचर्स प्रॉफिट के ऊपर बट ही हैज नो बीकेबी सो लेट्स जस्ट डाइव हिम इनटू द टियर 2 and take him out and get 1600 gold. These are the key moments, small moments थे जिनके ऊपर इन्होंने कैपिटलाइज करते हुए नजर आए थे. Even nature profit TPing to the back of the triangle and farming there and making a 300-400 goal. That was crazy on the side of roadmap, and this is how they beautifully played the map with being pressured. They were able to not let that net worth get to more than 10k. डेफिनेटली आरसी जैसे कि आपने मेंशन किए सारे फैक्टर्स बहुत ही ब्रिलियंट कमबैक का हमने देखा था बट हम प्राइस पूल को देखेंगे टोटल ऑफ $1200 हमारे पास अवेलेबल हैं प्लस $250 ऑफ एडिशनल मनी जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अमंग्स द टॉप 4 टीम्स बट रोड मैप की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास एक दूसरी टीम आ गई है टीम रैंडम जो कि शाइनिंग क्राउन को ज्वाइन करेगी इन द प्लेऑफ्स 2 टीम हमारे पास प्लेऑफ्स की आ गई हैं 2 टीम मंथली क्वालिफायर्स की बच गई हैं वो कौन सी टीम है परहैप्स टीम वुफर्स वापस आएँ जैसे कि हमने गेम 2 में देखा आरजी आई थिंक टीम वुफर्स के पास इतना पोटेंशियल है कि वो प्लेऑफ्स भी खेलें बिकॉज ये गेम जो थी ये गेम उनकी थी जीतने के लिए ज़रूर टीम रैंडम ने बहुत अच्छा कमबैक किया लेकिन टीम वुफर्स इतने करीब थे विक्ट्री के एक रैक्स उन्होंने ले लिया था दूसरे रैक्स में जाने में वो उन्होंने अल्केमिस्ट का डैमेज अंडर एस्टिमेट कर दिया लेकिन गेम बहुत अच्छी खेली मिड लेन पे भी उन्होंने लेन को डोमिनेट किया ऑफ लेन को भी डोमिनेट किया उन्हें लीजन कमांडर उनका आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था बहुत सारे वक्त के लिए सो मेरी पर्सनल उम्मीद ये है कि टीम वुफर्स दूसरे मल्टी क्वालिफायर खेले और एक और चांस ले आगे प्लेऑफ्स में जाने तक. Definitely, I think we are looking forward to that, and obviously, they kept it very close in the both games. It came down to the fact that कुछ हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ थी, and when it comes to the lane, Kunkka won the lane. When it comes to the bottom lane, Legion Commander won the lane. When it comes to top lane, Templar had a bit of struggle in terms of surviving, obviously. लेकिन in terms of you point out this bigger picture, okay, Team Movers does definitely have the capacity. आज की गलतियों से सीख के हमें अगले qualifier number 3 में भी नजर आ सकती हैं. And if they made their way into the monthly finals too, there is no thing that should stop them from qualifying to the monthly final 3 or 4. So as you mentioned, they should not let it go. What they should definitely do is take a bit of a breather today, go home, maybe look what they did wrong, दोबारा उस चीज़ों को देखें and see those things that ये चीज़ हम यहाँ पे ये कर सकते थे, oh we could have won this, and the mindset where you learn from what you did wrong, this is where you grow better. Team Woofers probably never had this kind of an opportunity where they could reevaluate in such a way कि okay, as a team individually nobody did wrong. Individually हमारे पास जाके वो लोगों ने उसी के ऊपर जाके डिफेंड किया था, स्कैरेथ वॉर्ड तोड़ा था, but नहीं, as a bigger picture, as a team, what could have we done differently? Did this decision impacted us? Let's not do that next time. And I think we can see them in a better क्या नाम है उसको परफॉर्मेंस के साथ नेक्स्ट स्टेज के ऊपर. डेफिनेटली आई सर्टनली होप कि टीम वुफर्स जो हैं वो वापस आएँ. लेकिन गाइज आई होप आप लोग को ये गेम पसंद आई. डेफिनेटली मुझे तो कास्ट करने में बहुत मज़ा आया, स्पेशली आरसी के साथ कास्ट करने में मज़ा आया मुझे. होपफुली टीम वुफर्स वापस आते हैं. कंग्रेचुलेशंस टू टीम शाइनिंग क्राउन एंड कंग्रेचुलेशंस टू आज की टीम जो कि आगे जाएगी. बट अभी के लिए इतना ही होगा गाइज. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Upstream, are you with me? Rainbow.
Burning in the city, rushing through me. Downfall, upstream, are you with me? Feel it. Rushing through me, downfall, upstream, are you with me?